Good afternoon, everyone. How are you all? Good, thank you. ठीक है. So almost we are in the end of the physical geography of India. So we discussed about the monsoon of India, overall concept, monsoon. The classical theory and the modern theory, characteristics of monsoon, then western disturbance. So overall, monsoon is a mechanism which involves multiple different factors. So the mechanism of monsoon can be explained by understanding the conditions of different seasons. Okay, very brief recap. So during the winter, temperature is low, pressure is high, the sky is clear, there is no precipitation, and there are surface anticyclonic circulations, and that is accentuated, that is strengthened by the subtropical westerly jet stream, so which is strongly established over the northern plains, and that is the southern branch of it, the northern branch being towards the north of Tibetan Plateau. So that will induce much more stronger anticyclonic circulation, causing the winds to blow from land to sea, and some of it, while crossing the Bay of Bengal, picks up moisture and causes precipitation along the Coromandel coast. This is winter. So during the spring, the land starts to heat up, the temperature starts to rise. So however, still there is not much of convection, and but once the subtropical westerly jet stream shift towards the north of Tibetan Plateau completely, so then the convection starts, then the because of the continuous the movement of air, the convection of air, so there are pre-monsoon showers here and there. Okay, so the overall condition is that the temperature has become very high and the pressure has started to drop. So during the summer, the pressure is the least, that attracts the entire ITCZ to completely shift towards the north. As it completely shifts towards the north, the northernmost extent of this, the southeastern trade winds, will start to move towards the north. Once they cross the equator, they turn towards the right under the influence of Coriolis force, and that is what we call it as the southwest monsoon winds. So these southwest monsoon winds and the strength of it depends upon the high pressure of the coast of Madagascar and the Somali jet stream, and also the tropical maritime equatorial maritime air mass. So that will bring the moisture content towards India. So once it brings the moisture content, once the air has started to come, still there is no precipitation because the overall air is stratified, and because of that stratification of air, there is no large scale convection. So for that we need the entire stratified air to be disturbed, and that is done by the tropical easterly jet stream and the depressions in Bay of Bengal. So that will disturb the entire stratification of air. Then the monsoon is triggered, which we call as the burst of monsoon. But however, due to some local conditions, the local air stratification would return, and also the wind will blow sometimes parallel to the topography, because of which the rain will stop, which we call it as the break in the monsoon. So once this happens, it spreads all over India.
So the monsoon branch is divided into two parts. One is towards the Bay of Bengal, and another towards the Arabian Sea. The Bay of Bengal branch will not cause precipitation over the Coromandel coast, but once it starts to hit the KG Delta, the precipitation increases in this direction. And once it comes near to the Himalayas, it gets bifurcated into two parts. One moves towards the east, another moves towards the west. Moving towards the east, suddenly it encounters very steep mountains. It rises abruptly, causing very heavy precipitation in Meghalaya, and the entire parts of northeast India receives a very good precipitation. So whereas the Ganga branch moving towards the interior, moving towards the west, precipitation decreases from east to west. The Arabian Sea branch hits the western coast. The western side of the Western Ghats are triangle and causes very heavy precipitation, but as it starts to descend down, there is not much of precipitation due to rain shadow effect. And the branch which is moving towards the north moves parallel to the Aravallis and will not cause much precipitation. Once it merges with the Bay of Bengal branch, then it starts to cause some precipitation over there. So as it starts to rise along the Himalayas. So during the season of autumn, okay, the retreating monsoon season, the temperature starts to decrease and the pressure starts to rise, because of which the ITZ starts to shift down. As the ITZ starts to move down, the northernmost extent of the southwest monsoon winds will start to come down, and that region which were earlier experiencing the southwest monsoon wind will start to experience the northeast winds. That replacement is called as the retreat of monsoon. So the overall situation continues till the end of October, and then again the winter situation is here. So in October we experience some hot temperature, even though it should not be so, जिसकी वजह से October heat बोलते हैं उसको. This is overall monsoon mechanism. Any doubts here? Western disturbance is basically the moisture content and low pressure brought by the subtropical westerly jet stream coming from the Mediterranean region, and there is a precipitation low pressure condition, and that is brought here, and that causes precipitation when these winds come near to the mountains. That is what we call as western disturbance. And इसके साथ में तो हमने देख ही लिया the impact of El Nino, La Nina, MJO, IOD, इसके बारे में डिटेल में बात हुआ है ओशियोनोग्राफी में. Okay, you can connect with the monsoon here. So that's because the entire air is not very good for the large scale convection. So stratified air always suppresses convection. Okay, so the air is trying to rise, and because the moisture content is high and the overall there is a tendency of expansion, but the overall stratified air will start to suppress that. But एक बार वो डिस्टर्ब हो गया, फिर वो पूरा वीक हो जाएगा एक ही टाइम में, जिसकी वजह से सडनली बारिश शुरू होता है. दैट इज व्हाई इट इज बर्स्टिंग ऑफ मॉनसून. Anything else? Why it should be much more in June, July, but the precipitation will cause some lowering of temperature. There's not much of precipitation in May, that's why it is higher. Because during that time, why there are no eastern disturbance? So because there is no jet stream from the eastern side to bring the moisture content. The jet stream is coming from the west, that's why it is called as the western disturbance. Anything else? The factor is? It's because of the wind direction. Why the Tamil Nadu coast remains dry during the southwest monsoon? It's because of topography. The overall coastline direction is such that the winds are blowing continuously parallel to it. Okay, this is the direction of the winds. Because as the winds come from this direction, see, यहाँ से तो आएगा, it will hit the coast. But ये जो आएगा, so majorly they get bifurcated like this. So most of the winds are blowing parallel to the topography. Yes, some of the winds which are descending down. So that is there not only here. The entire region is under the influence of that, the rain shadow. Hailstorms are basically, usually it is a result of convection, where there is a strong convection.
The land, as the land starts to heat up during the spring and summer season, okay, so the conditions are very favorable for precipitation, but there is not much of moisture content, इसलिए हमेशा नहीं होता है. But wherever there is some moisture content brought by the local winds, you know, so that causes a strong convection. Strong convection causes cumulonimbus clouds, and if that clouds are cooling rapidly in the upper parts, so that causes hailstorms. So basically, hailstorm is not related to season as such. It's a type of precipitation. It's just a type of precipitation because of rapid convection, strong convection, we can say. Clear? Okay. So we're discussing about soil. The types of soils in India. Briefly, I gave you the examples of various different factors in the context of India. So now the soil types of India. There's one more map of this. ये भी एक बार देख लेना. So if at all the question is about the annual precipitation of India, overall precipitation of India, so you can use this to explain the distribution. You can see this, the dark part hai, this is more than 200 centimeters. Okay, this is 100 to 200 centimeters. उसके surrounding में है, eastern parts में है 100 to 200. And the rest of it is between 50 to 100, and this dotted portion is less than 50 centimeters. ठीक है? The soil types of India. So total there are 7 types of soil which are found in India, of which 5 are major type and 2 are minor types. So what are the 7 types of soil found in India? सबसे पुराना कौन सा है? Red soil. How red soil is formed? Where the precipitation is not too much. बहुत ज़्यादा precipitation नहीं है, moderate precipitation है, and where the rocks are granitic and gneiss. Okay, where hard plateau rocks are there. Over a long period of time, they have undergone weathering and the oxidation, and जिसकी वजह से वो red color होता है. That is what is red soil. ठीक है? So that is what is red soil. See, most of the peninsular region was supposed to be covered with red soil only. Excuse me. So most of the peninsular region was supposed to be covered with red soil only. The entire peninsular block I am talking about. जो सबसे पहले था, so Pangaea से separate होके गोंडवाना का part बना था. So then it got separated and then it collided, right? So that older part is the hard igneous and metamorphic rocks, which over a period of time has got weathered and has become red soil. So technically तो ये पूरा cover होना चाहिए. But wherever within this region, wherever there was a good precipitation, जहां पर बहुत अच्छा खासा precipitation हुआ है, where the precipitation is too high to cause laterization, it has resulted in the formation of laterite soil. So that includes the western side of Western Ghats, and then parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, parts of Andhra Pradesh also, and then majorly Meghalaya, and southern parts of Aravallis, जहां पर थोड़ा बहुत बारिश होगा. Okay, within this region, wherever the precipitation was high, due to the process of laterization, we have laterite soil, जहां पर बहुत ज्यादा precipitation हो गया. ठीक है, precipitation तो है, but
along with precipitation when this region was moving towards the Eurasian plate. In between, it encountered reunion hotspot, which resulted in the eruption of basaltic magma. Over a period of time, this basaltic rocks has undergone weathering, and uske top layer mein you will find black soil. Okay, within this region only. अगर ये सब कुछ भी नहीं हुआ तो ओरिजिनली क्या होना चाहिए इधर? रेड सॉइल. इसका शेप याद रखना बहुत इजी है. ये पूरा यहां से होना चाहिए, महाराष्ट्र एंड नॉर्थन कर्नाटका एंड देन सदर्न गुजरात एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश. एंड ये जो दो वैली है, कौन सा वैली है? गोदावरी एंड कृष्णा वैली, वहां पर भी स्प्रेड हुआ है. ओके, इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन आया तो यू शुड ड्रॉ दिस. दिस इज ब्लैक सॉइल. सो बाकी सारा रेड है, इसमें जो भी बच गया वो सारा रेड है. So then comes the northern plains, wherever the riverine plains are there, as well as the coastal plains are there. We have alluvial soil. So technically यहां पर भी alluvial होना चाहिए था, बाद में इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है. एंड देन वो तो जहां पर हुआ है बस हुआ है. So this is alluvial soil. So जहां पर बहुत ज्यादा evaporation हो गया, saline soil, okay, which is desert soil. Five types हो गया. These are the 5 major types of soils of India. And the 6th one is mountain and forest soil. थोड़ा सा सिमिलैरिटी है एक्सेप्ट फॉर द थिकनेस. फॉरेस्ट सॉइल का थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जहां पर फ्लैट होगा थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा रहेगा, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर सेम. दैट्स व्हाई वी क्लासिफाई इट एज mountain and forest soil. एक लास्ट छोटा सा है PT soil. PT, what do you mean by peat? हाँ, कोल का एक टाइप है, बट जहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है along the delta regions. So where we had discussed about glaciation, right? So there you find this PT soil. Delta region where there is organic content, where the submergence of water is predominant. So you will find PT soil. ठीक है? तो अभी बताइए, कुछ डाउट्स था? यहां पर भी है. Forest, it's not forest soil, it is majorly mountain soils, mountains and forest है. So some other regions of forest soil include the Madhya Pradesh, okay, patches, and the parts of Nilgiris. ऐसे patches में है, but यहाँ पर continuously मिलेगा आपको. Run of Kutch is also, we can say, saline, slightly saline. ठीक है? These are the types of soils of India. 7 major types and their distribution. अगर क्वेश्चन आया distribution, definitely you have to write a map and show the distribution. Areas roughly याद रखो, so you should write
अबाउट देम, मतलब कहाँ पर है एग्जैक्टली. So other than this, about these soils, there would also be some specific questions regarding the characteristics of these soils. Prelims में questions आएगा about the brief nature and characteristics. ये थोड़ा बहुत टेक्निकल है, याद रखना मुश्किल है. So हम क्या करेंगे, एक दो शॉर्टकट्स पकड़ के कोशिश करेंगे एलिमिनेट कर दे इसमें. Because you have to remember, it is very difficult to remember which soil contains what mineral, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है. So agriculture स्टूडेंट्स है तो उनके लिए तो याद रहेगा, बट सारे लोगों के लिए याद मुश्किल है. So इसलिए देयर आर फ्यू शॉर्टकट्स, ये याद रखो, हो जाएगा. रिगार्डिंग नाइट्रोजन, क्वेश्चन कैसा आएगा, वेदर दिस सॉइल कंटेन नाइट्रोजन, दिस सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन, दिस सॉइल इज रिच इन फॉस्फरस और रिच इन आयरन. जो मिनरल कॉम्पोनेंट्स कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ये इसके बारे में क्वेश्चन आता है. ठीक है. So there are few common things. Nitrogen is deficient in all the soils of India. India का सारा soils, all the 7 types are deficient in nitrogen. Okay, ये पहले लिखो common characteristics. All Indian soils are poor in nitrogen. अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ गया, सो दिस सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन, मतलब उसका स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, क्लियरली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. कोई भी ऐसे सॉइल नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा यूरिया यूज करते हैं, है ना. यूरिया इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन, आयरन किस में ज्यादा होता है, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल. लेटराइट में भी आयरन बच जाएगा ना ऊपर, इसलिए लेटराइट सॉइल में भी थोड़ा सा रेडिश कलर होता है. ओके, इवन दैट इज रेडिश इन कलर. कैन से आयरन एज वेल एज अल्यूमिनियम, दोनों रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल. ठीक है. तीसरा चीज है ह्यूमस. व्हाट इज ह्यूमस? ऑर्गेनिक कंटेंट. सो बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है which gets added to the soil over a period of time, undergoes decomposition and it takes a form जो black color form ले लेता है, which is very rich in these nutrients which can be easily absorbed. That is what we call as the humus content. So which soils are rich in humus content? Black soil. However, the black color of black soil is not due to humus content. It is due to a compound called as टाइटानिफेरस मैग्नेटाइट. ओके, तो वो ब्लैक सॉइल में लिखेंगे, अभी के लिए रहने दो. सो ह्यूमस कंटेंट इज देयर इन ब्लैक सॉइल एंड देन माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल, देन पीटी सॉइल. अलीवेल में भी नहीं होता है पीटी सॉइल. ये तीनों में प्रेजेंट है, बाकी सारा पुअर है. ओके, रेड सॉइल में नहीं होगा, लेटराइट सॉइल में नहीं होगा. लेटराइट में तो पूरा वॉश अवे हो जाता है. अल्यूवियल सॉइल में भी बहुत फ्रेश है, उसमें तो ह्यूमस कंटेंट नहीं होगा. एंड डेजर्ट सॉइल में तो बिल्कुल नहीं होगा, वेजिटेशन ही नहीं है. नहीं, ओवरऑल इट इज रिच इन दिस बस. सो व्हाई ब्लैक सॉइल इज गुड इन ह्यूमस कंटेंट? Because of its retaining capacity. Black soil is highly porous, but it is not permeable. It will not let it pass through any of these colloids or the water to let it pass through very easily. उसको पकड़ के रखता है. It will hold it back.
Okay, these are the some of the common things. इससे थोड़ा बहुत याद रहेगा. So in addition to this, we will talk about these soils individually. Okay, the first one, red soil. Red soil. The climate is moderate to low precipitation. Moderate to low precipitation. Right? So यही इसी जगह में हाई प्रेसिपिटेशन हो गया तो लेट राइट बन जाता है. ठीक है. The climate is moderate to low precipitation and dry conditions. The parent rock, next point, parent rock material is granite and gneiss. Excuse me. Granite and gneiss. So it is rich in, next point, it is rich in iron, aluminium, magnesium, and deficient in nitrogen, humus, and phosphorus. Nitrogen, humus, and phosphorus. Regions कहां पर है? सदर्न कर्नाटका, सदर्न आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, and parts of northeast. Parts of northeast. Next, black soil. First point. The color is black due to the presence of. The color is black due to the presence of titaniferous magnetite. Titaniferous magnetite. Parent rock material, next point. Parent rock material is basaltic rocks of Deccan Traps. Next point, it is rich in humus content. It is rich in humus content. Next point, it is deficient in nitrogen, phosphorus,
So next point, it is called as self-plowing soil. It is called as self-plowing soil. So why it is called a self-plowing soil? Because during the dry season it becomes totally cracked. वो अपने आप क्रैक हो जाता है. प्लो करते समय हम क्या करते हैं? विल मेक क्रैक्स इन द सॉइल सो दैट देयर इज अ प्रॉपर मिक्सिंग अप एंड एरिएशन, राइट. वो ड्राई सीजन में अपने आप पूरा क्रैक्स हो जाएगा. ओके जब बारिश आएगा पूरा सा वेट ऐसे मडी मडी जैसे हो जाएगा. ओके दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल. So it is called a self-flowing soil because it is sticky when wet. It is sticky when wet and form cracks when it is dry. Regions. Maharashtra, Northern Karnataka, Southern Gujarat, Western Madhya Pradesh, parts of Telangana. Third one, laterite soil. Climate, very high precipitation, very high precipitation with some dry conditions. High leaching, causing laterization. Next point, rich in iron, aluminium, potash, poor in silica, bases, that is the salts, sodium, potassium, magnesium, calcium, humus, and phosphate.
Next point. It is suitable for plantation crops. It is suitable for plantation crops of coffee, tea, rubber, cashew nut, spices, etc. Due to its acidic nature. Due to its acidic nature. Regions. Western side of Western Ghats. Parts of Odisha. Meghalaya. Hills of Central India. Hills of Central India. And southern parts of Aravalis. Southern parts of Aravalis. Next, alluvial soil. It is due to the deposition of sediments. Due to the deposition of sediments by the rivers. Next point. There are no marked differences of layers. Marked differences of layers. मतलब you cannot identify proper layers within this soil. Okay, जैसे well developed soil रहता है, you can clearly identify different horizons, regions, northern plains and coastal plains. Northern plains and coastal plains. Next. Arid or desert soil. Arid or desert soil. इसमें ज़्यादा तो नहीं, नाइट्रोजन डिफिशिएंट है, ह्यूमस डिफिशिएंट है, और सब तो वैसे वेल डेवलप्ड नहीं होगा. इट इज जस्ट फ्रेशली डेवलप्ड लेयर ऑफ सॉइल है ना. इट कंटेन्स मिनरल्स बट प्रॉपरली वेल डेवलप्ड ऐसे सेग्रीगेटेड तो नहीं होगा. सो इट इज रिच बट न्यूट्रिशन नाइट्रोजन डिफिशिएंट है, ह्यूमस डिफिशिएंट है, बाकी सारा तो है. तो ओवरऑल तो है. So in terms of the fertility, of course alluvial soil is the most fertile, but you need to add some nitrogen over there. यूरिया तो ऐड करना ही है उधर. So वो इसलिए कि थोड़ा बहुत नाइट्रोजन रहता है wherever there is leguminous plants. Only they are capable of fixing the nitrogen. Otherwise nitrogen absorb होता ही नहीं है atmosphere से. So that's why we have to add. So mountain or forest soil. Sorry, arid and desert soil. ठीक है. It is due to high evaporation and low moisture content.
high evaporation and low moisture content. Next point, saline salts get accumulated in the top layer. Saline salts get accumulated in the top layer because of high evaporation, right? Deficient in nitrogen and humus. Regions. Northwest Rajasthan. Northwest Rajasthan. And northern Gujarat. Next, mountain or forest soil. वहां पर बहुत ड्राई नहीं बोलते क्योंकि सलाइन, हाँ सलाइन नहीं है, बहुत ज्यादा एवोपरेशन तो ज्यादा नहीं है उधर, प्रेसिपिटेशन नहीं है, बस वेजिटेशन भी नहीं है, इट्स ए ड्राई रीजन. We don't call it as a saline soil. So next, mountain and forest soil. First point, it is a thin layer. It is a thin layer in case of mountain. Case of mountain soils. Next, rich in organic content. Rich in organic content and slightly acidic. Regions, Himalayas, parts of Vindhyas, Satpuras, and Western Ghats. Vindhya, Satpuras, and Western Ghats. Last one, PT soil. PT soil found in the regions submerged in water. Found in the regions submerged in water. Next point, rich in organic content. Rich in organic content. Next point, saline in some regions. Saline in some regions. ये saline क्यों हो जाता है? Because of salt water intrusion, है ना, salt water intrusion की वजह से. Regions, coastal deltas of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, Kerala. Okay, so that's about soil. Just give me a minute, I'll be back.
Yeah, sorry. So that was about the soils of India. It's not only Indian soil as such. So most of the soils are deficient in nitrogen because जो naturally लेग्यूमिनस प्लांट्स जहां पर होता है ना, वो सब तो नेचुरली हमने रखा ही नहीं. मोस्ट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स. सो यू विल अंडरस्टैंड मोर इन एनवायरनमेंट. जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे तब ये समझ आएगा. सो नाइट्रोजन इज देयर टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट इन द एटमॉस्फेयर, बट सॉइल में तो बिल्कुल कम है. ओनली फ्यू ऑफ द प्लांट्स आर केपेबल ऑफ ऑब्जॉर्बिंग दिस. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज लेग्यूमिनस प्लांट्स. कि पल्सस हो गया मेजरली. बट जो ये नेचुरली आते हैं उसको तो हमने एग्रीकल्चर के नाम से सारा हटा दिया कि मोस्ट ऑफ देम आर गॉन. एंड जिसके वजह से जो प्रॉपर नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन जो नेचुरली होता है वो बहुत बहुत कम है. दैट इज द रीजन. नॉट ओनली इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द सॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. Okay, wherever except there some naturally leguminous plants are there, except that most of them are deficient in nitrogen. In what context? Not very generally. It's not required. बहुत technical है, मैं बताता हूँ बाद. Anything else? Yes. No. Mostly carbon compounds रहता है. Nitrogen will not be there as if in a free nitrogen form. Okay, it's majorly carbon compounds. Anything else? But not all the nutrients. The nature of the black soil is basically it's derived directly from the basaltic magma. है ना, basalt से आए. So it's not like it will support all the type of crops. यहाँ पर जो suitable crops है cotton, naturally जो cotton है, and then sugar cane. Okay, and some oil seeds. Most of the oil seeds they don't require much specific soil, they can grow. Oil seeds हो गया, pulses हो गया. So they are the ones which can be grown naturally here. Overall उसका nature, every soil has some basic characteristics which enables it to grow certain type of crops. ठीक है, वो हमें याद होना चाहिए कौन सा सॉइल में कौन सा टाइप आता है. वो हम दोबारा बात करेंगे, एग्रीकल्चर में बात करेंगे कौन कौन सा सॉइल में कैसे कैसे क्रॉप्स आएगा. ठीक है, क्रॉपिंग कंडीशन में बात होगा इसके बारे में. ठीक है. So that covers the physical geography of India. Okay, so you'll read some more things about the parts related to the soil erosion and the regions affected by soil erosion, है ना. So ये सारा आप environment में cover करोगे. Okay, so environment में the land degradation, desertification is a major issue. There you will have to find, you will have to read in more detail about the reasons behind the soil erosion, different types of soil erosion, and the correction methods which are required to bring back the fertility. So ये सब चीजें बात होगा वहां पर. ब्रिक्स तो वैसे बहुत सारा वेराइटी में बनाते हैं. they are made all over India. Okay, so majorly they mix clay mix करते हैं थोड़ा सा उसमें, and locally available red soil is also used.
Usually red soil is what I have seen. Otherwise it's made all over India. हर जगह में बनाते हैं, हर जगह में बनता है. Black soil has, yes, can say so. Okay, so let's start with the next unit, economic geography. So economic geography includes, so technically it should include economic and human geography. Okay, that is the part which is left. बट यूपीएससी में तो ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, मेंस में पर्टिकुलरली. प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चंस आए हैं इन लास्ट 15 years. सो दैट टू यू कैन आंसर यूजिंग करंट अफेयर्स. सो स्पेसिफिकली ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने का जरूरी नहीं है. So however, there would be some basic details, basic things related to the population, the settlements, all of this we'll discuss in the end. उसके बारे में बात करेंगे. So overall, the topics of economic geography. The water resources, the natural vegetation, mineral and energy resources. These are all related to resources. Overall resources of India and the world. World level में India level पे दोनों parallel बात होगा. And in terms of economic activities, we'll talk about the agriculture, industries, and transportation. And finally, we'll discuss briefly about human geography. Okay, online students, please raise your queries in the query portal. कहाँ पर किसी का डाउट है? ठीक है. So this is your economic and human geography. Prelims में इसका weightage बहुत कम है. So usually prelims में direct question आने का chances तो बहुत कम है. So few questions are there related to the vegetation and mineral resources. But overall it's a mains topic. So mains topic में भी nature कैसे होगा? So what is the nature of the questions? So unlike the other parts of the geography, जो physical geography था, हमने बहुत slowly आराम से समझा है क्लास में, है ना. तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं होने वाला है. सो द रीजन बीइंग दैट कि वैसे करने से कोई फायदा भी नहीं होगा. द क्वेश्चंस आर नॉट प्रिडिक्टेबल हियर. द क्वेश्चंस आर नॉट प्रिडिक्टेबल. द क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स और टेक्स्ट बुक. जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही आप लिख सकते हैं. वो आप कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में. इन फिजिकल ज्योग्राफी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली जो हमने क्लास में डिस्कस किया उसी को ऐसे ही एज इट इज लिख सकते हैं. बट इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज नॉट समथिंग लाइक दैट. इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज you have to think and apply and make your own answer then and there based on whatever we're going to discuss. So based on this you have to think and apply and make your own answers then and there. उसका nature भी ऐसे होता है कि for example, so we will study overall about the petroleum reserves. Petroleum resources के बारे में पढ़ते हैं. Okay, question ऐसे आएगा. So what are the implications of having petroleum reserves not being distributed uniformly? Since they are not uniformly distributed, उसका क्या implication होगा? तो इसका तो वैसे कोई if you see any of the material उसमें directly कहीं पे भी ऐसा mention नहीं है. It's not something like text book में दिया है इसलिए पूछ रहे हैं. इसलिए टेक्स्ट बुक में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हुआ है एंड उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया है. तो उसको रखे आप. थोड़ा बहुत क्लासेज जितना डिस्कस हुआ है और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स है, थोड़ा बहुत अपने कॉमन सेंस लगा के एक आंसर प्रिपेयर करना है. सो दैट इज व्हाट इज अप्लाइड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी लाइक दिस. फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डायरेक्ट. ठीक है. सो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, तो इजी है, स्कोरिंग भी इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है. बट अप्लाइड क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आपको सोचना ही है. So जैसे पेपर 2 पेपर 3 में क्वेश्चंस आएगा. पेपर 2 पेपर 3 इज मेजरली फिल्ड विद अप्लाइड क्वेश्चंस, है ना. सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गिव ए प्रॉपर डिक्टेशन हियर. ठीक है. इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी बट यू हैव टू लर्न दिस. दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, है ना. सो
ऐसे तो करना ही है, तभी वो आपके लिए भी फायदा होगा। स्टार्टिंग से मैंने स्लोली किया है ना, तो स्लोली स्लोली लेके आया, अभी तो सब पक गए हैं है ना, तो पहले कच्चे थे, अभी तो पक गए हैं, ठीक है। सो वंस यू कंप्लीट द सिलेबस, सो यू गो आउट एंड प्रिपेयर ऑन योर ओन, एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, ऐसा ही जाएगा। You will study something and you will comprehend by yourself and you will make notes out of this and you will decide whether it is required for UPSC or not. So this is how your preparation should be there. So हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वेर एवर देयर आर डेफिनेशंस आई विल डिक्टेट द डेफिनेशन, बट ओवरऑल यू हैव टू फॉलो द टॉपिक एंड कॉम्प्रहेंड बाय योरसेल्फ एंड टेक ए रनिंग नोट्स। एंड इसमें ऐसे भी नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वही होगा, इसके साथ में आप लोग बहुत सारे कुछ ऐड कर सकते हैं। ओके, इट इज नॉट द कोर पार्ट ऑफ जियोग्राफी, कोर पार्ट ऑफ जियोग्राफी इज ओवर, बट वो जो हमने कोर पार्ट ऑफ जियोग्राफी हमने पढ़ा था वो बड़ा जरूरी है यहां पर। इफ यू हैव नॉट रिवाइज थरोली यू मे नॉट गेट मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, मैं अभी भी बता रहा हूं। ओके, इसलिए वो जल्दी से जल्दी फिजिकल पार्ट जल्दी रिविजन शुरू कर दो और खत्म भी कर दो जल्दी से जल्दी, सो तभी यहाँ पर फायदा होगा। बिकॉज एवरीथिंग वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, फिर बात आएगा क्लाइमेट का, सॉइल कंडीशंस का, ओके, फिशिंग रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, फिर आएगा दोबारा आएगा ओशन करेंट्स के बारे में, है ना। सो ऑल ऑफ दिस दे विल कंटिन्यूसली कम बैक, सो प्लीज थरोली रिवाइज द फिजिकल पार्ट, देन ओनली यू विल बी completely done with this economic geography part. And second, current affairs भी बहुत ज़्यादा important है। So अभी के लिए few of the things you might not understand, few of the things you may feel इससे काफ़ी नहीं है ऐसे लगेगा, so definitely वो है, क्योंकि once you add on current affairs then only your preparation in this economic part is going to be complete. Fine. So that's why we'll discuss, and on the go you take the notes and I'll make it more of discussion oriented, जैसे आप भी points discuss करेंगे, add करेंगे, because this is not conceptual related, this is थोड़ा सा common sense लगा के सोच के आंसर बनाना है, ठीक है। So we'll start with the water resources, then the vegetation resources, then agriculture, mineral energy resources, industries, transportation, and then human geography, ठीक है। The first one, water resources. So in this first topic is oceanic resources. So water resources includes overall the entire water on the surface of earth and the resources which we can derive out of it and the problems and the issues associated with that. The first one is oceanic resources. So oceanic resources refer to the resources which we can extract from the oceans. Simple है ना? So which we can extract from the oceans. Ocean से क्या क्या मिलता है बताएं, देखते हैं। Petroleum, fish, sand, what minerals? What rocks? Rocks are everywhere. We cannot just say rocks. Pearls, ठीक है. Then salt, ठीक है, good. What? Which kind of water? So how do we define a resource? What is a resource, बताएं? Which has some economic utility, है ना? Something which has economic utility. So what is the economic utility of what this water you are talking about? हाइड्रो पावर तो ऐसे ओशन से तो नहीं निकाल सकते। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। देन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, वेरी गुड। पॉली ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है, गुड। ट्रांसपोर्टेशन वी डोंट कॉल इट एज रिसोर्स, वी जस्ट इट इज अ सर्विस, जस्ट मेक यूज ऑफ इट, ठीक है। विल नॉट बी कंसिडर इट एज अ रिसोर्स। देन हो गया। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। देन you can extract hydrogen,
हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर हाइड्रोजन से फ्यूल भी बनता है, ठीक है। और यस, फूड रिसोर्स इंक्लूडिंग फिश, प्रॉन, क्रैब्स, सी वीड्स, ठीक है। देन और हाँ, प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशनिक रिसोर्सेस, 10 मार्क का क्वेश्चन आया, आप कैसे कैसे लिखोगे? यू विल जस्ट लिस्ट इट डाउन, ठीक है। पहले रिसोर्स का डेफिनेशन देंगे, देन ठीक है। पर वो तो क्वेश्चन में पूछा नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन तो पूछा है व्हाट आर द ओशनिक रिसोर्सेस, बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। So, मेरी बात है कि जो बॉडी में आप बताया, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, अच्छी बात है। सो बॉडी में आप ऐसे लिस्ट करने से बदले, सी एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, डोंट मेक ए लीनियर लिस्ट, ट्राई टू सेग्रीगेट एंड कैटेगराइज इनटू मल्टीपल कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में दिखा दो, तब थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा, है ना, अच्छे से हाईलाइट होगा। सो यू विल बी एबल टू डेफिनेटली सेग्रीगेट देम इनटू मल्टीपल कैटेगरीज. All the oceanic resources can be categorized into 4 types. First one is mineral resources. Okay, the different types of minerals लिखते जाओ. Second, all the energy resources. Third, food resources. Fourth, fresh water resources. ओशन वाटर से फ्रेश वाटर भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 कैटेगरी हो गया। देखो, मिनरल्स आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, है ना, विच वी आर टॉकिंग अबाउट. दीज मिनरल्स आर फाउंड इन 2 फॉर्म्स इन द ओशनिक वाटर. ऊपर है, यहां पर लिखते जाओ. ठीक है, minerals are of 2 types. One is in dissolved form, second one in deposited form. Dissolved minerals and then deposited minerals. So, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिसॉल्व पानी में डिसॉल्व हो गया, मिक्स हो जाएगा, पानी में है. डेपोजिटेड पानी में मिक्स नहीं हुआ, सो नीचे डिपॉजिट हुआ है, इट इज अक्यूमुलेटेड on the floor. That is what is deposited minerals. So dissolved ये तो एक ही टाइप है. Most of them are salts. All the salts are dissolved minerals. So what are the major salts? Oceanography में मैंने बताया था, composition याद है? कौन कौन सा? So chloride, sodium, magnesium, calcium, ठीक है. So यही लिखो, bromine. Fine. All of these are the dissolved salts. Okay, यहाँ पर एक brief line add करना है आपको. So they are in the dissolved form. So इसका source है land से आएगा, and over a period of time it get dissolved in the ocean water and they are balanced. ऐसा नहीं कि increase होते जाएगा, they are balanced. So briefly एक line यहाँ पर आ जाएगा. ये सब तो डिस्कस कर लिया हमने सॉल्ट्स के बारे में. डेपोजिटेड मिनरल्स कौन कौन सा है? सो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डेपोजिटेड मिनरल्स, मतलब नीचे जो डिपॉजिट होते हैं. सो आइदर इट इज डिपॉजिटेड अलोंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ नियर टू द कोस्ट और अलोंग द ओशनिक बेसिन्स. 2 जगह में डिपॉजिट हो सकते हैं, राइट? एक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, दूसरा है ओशनिक बेसिन्स में. कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो होगा, जो नियर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, नियर टू द कोस्ट, नियर टू द बीच, है ना, इसमें कौन कौन सा मिनरल्स मिलता है बताइए? गोल्ड नोड्यूल्स नहीं बोलते, गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स. कि प्लेसर डिपॉजिट्स कैसे होगा, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया. Okay, placers are very minute fragments, okay, which are derived by the water erosion.
from its source. So फिर finally लेके जहां पर पानी खत्म हो जाएगा, so where it is ending, there it will deposit, or near to the plains it will also deposit. So in many of the regions we find these gold placer deposits. Examples: Subarnarekha, and then Gulf of Mexico, then Yukon River. Yukon, YUKON. कहां पर है यूकॉन? कहां पर? अलास्का. वेरी गुड, अलास्का. सो वापस जाके ये मार्क करना है इसके बारे में. सो दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड. Gold placers is one rich mineral group which is found near to the coast. Other than that, precious gems, ठीक है. Pearls, we can add pearls. Pearls specifically. Then वो एनर्जी में इंक्लूड कर देते हैं, पेट्रोलियम एंड गैस एनर्जी में इंक्लूड कर देते हैं. देन सी शेल्स. शेल्स का क्या यूटिलिटी है? दे आर यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. Sea shells are used in cement manufacturing. One of the very important sources, the raw material used for cement manufacturing, shells. और sand, very important कंस्ट्रक्शन के लिए. ओके, यहां पर तो बस हम लिस्ट बना रहे हैं. जब आंसर में लिखना है कि एक एक लाइन लिखना है, कि जैसे मैंने जो भी बता रहा हूं मैं, सैंड, ग्रेवल्स, मड. सैंड और मड में क्या डिफरेंस है? साइज, पार्टिकल साइज. ये सबसे बड़ा है तो ग्रेवल हो जाएगा, मीडियम साइज सैंड है, सबसे छोटा है मड. मड सिल्ट बहुत फाइन हो जाता है, वो भी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है. कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, सीमेंटिंग में यूज करते हैं. एंड देन मैग्नेटाइट. व्हाट इज मैग्नेटाइट? आयरन ओर. आयरन का एक फॉर्म है. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कोस्टल रीजन यू विल फाइंड मैग्नेटाइट. एंड देन फॉस्फोराइट. फॉस्फेट का फॉस्फोराइट. देखो ये सब तो आपको पता है, लाइक यू हैव टू थिंक, यू हैव वंस यू स्टार्ट टू थिंक इट विल कम आउट. दैट इज हाउ यू राइट द आंसर्स. ओके, आप जितना सोच के लिखते हैं, जितना सोचना मतलब ऐसा नहीं कि बैठ के सोचने के लिए टाइम रहेगा. सो वही जल्दी सोचना है. सो वही है, दैट इज व्हाट इज प्रैक्टिस. सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच यू फाइंड अलोंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. अलोंग द ओशनिक बेसिन, अलोंग द ओशनिक बेसिन मिनरल्स पहुंचता कैसा है? फ्रॉम द वाटर. The ocean currents, okay, continuous ocean currents, they distribute all these sediments over a period of time, and in these sediments whatever the minerals which are capable of getting dissolved, they dissolve and become part of the ocean. So जो dissolve नहीं होगा, कौन सा dissolve नहीं होगा? Most of the metals will not get dissolved very easily, right? So all these metallic content will sink to the bottom gradually. Okay, it will gradually sink to the bottom. So over a period of time it will accumulate together and becomes nodules. Okay, nodules is छोटा छोटा सा ऐसे ball type हो जाता है. Okay, small ball kind of structure. So that is what we call it as nodules. It is majorly rich in manganese. Okay, manganese ज्यादा रहता है इसलिए उसको बोलते हैं manganese nodules. But however, along with manganese, many other metals are also there, and it contains a very wide variety of metals. आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, निकल, ऐसा बहुत सारा वेराइटी रहता है इसके अंदर. ऑल ऑफ देम मर्ज टुगेदर एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स. इट इज कॉल्ड एज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स. इट इज फाउंड ऑन द ओशनिक फ्लोर. ओके, इट इज an aggregate of multiple different metals on the oceanic floor. So they are also called as manganese nodules. Manganese nodules and polymetallic nodules are same. इसमें क्या क्या रहता है?
मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। इसमें बहुत सारा है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इट। In fact, many of these metals are more in this manganese nodules than on the land. Land से ज्यादा है. So then why we are not extracting? टेक्नोलॉजी उतना नहीं है हमारे पास, ठीक है, बात करेंगे. देयर आर मेनी इश्यूज एसोसिएटेड विद दैट. ओके, सो कैसे दिखता है? जैसे छोटा छोटा सा, इट इज स्प्रेड एवरीवेयर. ओशनिक फ्लोर में हर जगह में मिलता है. सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई इट इज नॉट इकोनॉमिकल. हर जगह में मिलता है बट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. ओशन तो बहुत डीप है, सो हम डाइव करके बस थोड़ा सा ही मिलेगा, फिर ऐसे ही हम मूव नहीं कर सकते हर जगह में जाने के लिए, बहुत वाइड है ना. सो ओनली इन फ्यू ऑफ द रीजन्स इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, ओनली फ्यू ऑफ द रीजन्स. अदर देन दैट इट इज नॉट. थोड़ा सा ऊपर से ऐसे दिखता है, ब्लैक कलर डॉट 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 दिखेगा. That is what is polymetallic nodules. The same kind of accumulation of metals happen near to the hydrothermal vents. What is a hydrothermal vent? Hydrothermal. What is hydrothermal vent? Yes, जहां से magma निकल के आता है, it heats up the water. Okay, near to the mid-oceanic ridges or hot spots. है ना. So in those regions also some of the metallic content accumulate around the sulfides. सल्फर के साथ में accumulate होता है. That is why it is called as polymetallic sulfides. Hydrothermal vents के पास में जो होगा that is called as polymetallic sulfides. This is polymetallic nodules and then polymetallic sulfides. So polymetallic sulfides are the aggregate of metallic minerals near volcanic mountains. Along hydrothermal vents. Stop. They are rich in sulfur, copper, lead, zinc, etc. ठीक है. So that is about the minerals which are dissolved here. फिर एनर्जी रिसोर्सेस में तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो वर्ल्ड मैप में आपको दिखाना पड़ेगा फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट लोकेशंस, है ना. सो कोस्टल लोकेशंस में तो ये सारा कोस्टल्स में मिल जाएगा, बट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स ओनली फ्यू ऑफ द रीजन्स वेयर दे आर कॉन्सेंट्रेटेड. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का तो स्पेसिफिक लोकेशंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम क्या होता है? ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर तो ठीक है, बट डिकम्पोज तो नहीं है. इट इज इन द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजिशन.
हाँ अनेरोबिक डिकम्पोजिशन, नॉर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, पूरा डिकम्पोजिशन हो गया तो खत्म हो जाता है ये, ठीक है. सो नॉट कंप्लीटली बेंथिक, they are not benthic. Benthic are basically bottom dwelling. So basically what are these? So along the continental shelf, okay, along the continental shelf, the regions which are rich in sunlight and oxygen, so you will find a huge quantity of organisms living. So this is the region which is very rich in life. 90% of the life is here. Of the ocean, 90% of the life is here in the continental shelf. So along this continental shelf, there is a group of microorganisms. Okay, a group of zooplanktons, okay, group of zooplanktons and algae, majorly microorganisms which live in the continental shelf only. And these microorganisms, when they die, they sink to the bottom. In some of the regions, they grow in large quantity. When they die and sink to the bottom, and there's a large scale accumulation of this, and such kind of buried organic matter of these microorganisms, if they get buried continuously over a long period of time, they accumulate at the lower depth. In the absence of oxygen, they undergo decomposition. Okay, anaerobic decomposition है, normal decomposition नहीं होगा इधर. So in that case, it gets converted into thick oil kind of substance. So that thick oil over a period of time reacts and finally produces the petroleum. And petroleum के through निकलता है natural gas. Both are associated. ठीक है. So इसको बनाने में मतलब like the entire process takes millions of years, not even thousands, millions of years लगेगा. ठीक है. And it cannot happen everywhere. Only specific type of conditions जहां पर high pressure है, high temperature है. अगर इतना easy है तो हम भी बना देंगे, है ना. ये तो नहीं होगा. It's not that easy. So over a period of long time it will take and it will form this. ये बनेगा तब. So now it is not present everywhere. सारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में तो नहीं होगा, ये तो मैंने बता दिया क्योंकि कंडीशन तो बहुत स्पेसिफिक है. इट इज लोकेटेड ओनली इन फ्यू ऑफ द रीजन्स. Only in few of the regions you will find them continental shelf में. But in many of the regions, not only continental shelf, even on the land also you will find petroleum and gas. है ना. For example, असम में है ना. तो even the West Asia, the entire West Asia का जो land है, सऊदी अरेबिया हो गया, है ना. So ये सारा जगह, even नॉर्थन अफ्रीका, लीबिया में मिलता है. ये सब कहाँ, कैसे, how is it possible? So at one point of time in the history it was submerged. वो पानी के नीचे था, अभी ऊपर आया है. So same is the case with Assam, है ना. When the Indian plate was moving, वहां पर तो continental shelf था, right? So same is the case with Saudi Arabia. वहां पर भी टेथिस सी था, नॉर्थन अफ्रीका में भी टेथिस सी था. So उसी पार्ट का था. It can not form on the land. लैंड में नहीं होगा and deep ocean में भी नहीं होगा. Once you cross the continental shelf, you will not have any of the petroleum reserves. Petroleum reserves are found only on the continental shelf. शेल्फ में ही मिलेगा आपको. ठीक है. जहां पर वाइडर शेल्फ है थोड़ा बहुत चांस है, बट वो भी नेचुरली वहां पर अवेलेबल होना चाहिए. सो दैट इज हाउ द पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड. पेट्रोलियम एंड उसके एसोसिएटेड है नेचुरल गैस. सो देन हाउ कोल इज फॉर्म्ड. कोल कैसे बनता है? प्लांट्स. बेसिकली पेट्रोलियम है नॉन वेजिटेरियन, कोल है वेजिटेरियन, है ना. ये वेज है, वो नॉन वेज है. So वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज zooplankton. So यहाँ पर है प्लांट्स विच आर केपेबल ऑफ photosynthesis and they have this organic matter. Plants are rich in organic matter. कार्बन है, उसके साथ में कार्बन के साथ में बहुत सारा compounds भी है. That is what is organic matter, right? So when this huge quantity of vegetation undergoes sudden burial क्यों होगा? When wherever the land cracks and collapses. Okay, why would the land crack and collapse? Wherever there is a subsidence of land. Okay, wherever there is a rifting activity. Okay, for example, the rifting which happened long back, which led to the separation of the entire Pangea. है ना, तब हुआ था, cracks हुआ था, बहुत जगह में cracks हुआ था. So along these region, wherever there was a vegetation, all of this got buried. When they get buried to a very deeper level, under again anaerobic condition, in the absence of oxygen, they undergo certain chemical reaction and then over a period of time it will get converted into coal.
उसमें क्या रिएक्शन होता है बेसिकली, उसमें जो कार्बन कंटेंट के साथ में बाकी सारा वाटर कंटेंट एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंटेंट रहेगा ना, वो सारा एलिमिनेट होते जाएगा, कार्बन कंटेंट का परसेंटेज इंक्रीज होते जाएगा. And you give more time, the older the organic matter, the richer the carbon content here. Richer the carbon content, better the quality of coal. जो पीट हम बोलते हैं, पीट है ना, उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट रहता है, बहुत सारा वोलेटाइल मैटर रहता है, उसमें तो बहुत बिल्कुल एनर्जी का तो बहुत बहुत कम अवेलेबिलिटी मिलेगा. सो पीट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स लिग्नाइट. लिग्नाइट बनेगा. लिग्नाइट तो ठीक ठीक है, उसमें बहुत थोड़ा बहुत धुआं निकलता है ना. लिग्नाइट भी आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स बिटुमिनस. बिटुमिनस इज कंसिडर्ड टू बी गुड. उससे बेटर है एंथ्रासाइट. ऑल ऑफ दिस, द डिफरेंस इज द कार्बन कंटेंट. कार्बन कंटेंट जैसे डिफरेंट होते जाएगा. ठीक है. सो इट इज बेसिकली फाउंड ऑन द लैंड, बट इन सम ऑफ द रीजन्स वेयर द कोस्टल रीजन वाज अर्लियर लैंड वाज देयर, अभी सबमर्ज हो गया, वहां पर कोल भी मिलता है. सो यू कैन ऐड कोल ऑल्सो हियर. ओके, पहले लैंड था, अभी सबमर्ज हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ में. सो नाउ यू विल फाइंड सम इन सम ऑफ द पार्ट्स कोल ऑल्सो. ठीक है. सो अदर देन दिस, एनी अदर एनर्जी रिसोर्सेस? सो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑयल एंड गैस रीजन्स लिखो, कहां पर मिलता है. फ्यू एग्जांपल्स: बॉम्बे हाई ऑफ द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मेक्सिको, एंड नॉर्थ सी. एंड ये बहुत नीचे बनता है. इट्स नॉट लाइक इट इज फॉर्म्ड ऑन द ओशनिक फ्लोर. ओशनिक फ्लोर से बहुत नीचे है. जो सेडिमेंट्री डिपोजिशन हुआ होगा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज बरीड बाय दैट. दैट इज व्हाई हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड. इट इज नॉट जस्ट ऑन द ओशनिक फ्लोर. सो कोल हो गया. उसके अलावा क्या क्या एनर्जी निकलता है ओशन से, बताइए. ऑफशोर विंड एनर्जी, वेरी गुड. सो यू मे से विंड तो लैंड के ऊपर है. लैंड के ऊपर, खाली लैंड के ऊपर नहीं है, ओशन के ऊपर भी रहता है. विंड्स आर देयर एवरीवेयर. 70% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद ओशंस. सो सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो ओशन से है. इनफैक्ट लैंड से ज्यादा पोटेंशियल विंड एनर्जी का ओशन में है, क्योंकि एरोजन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस, है ना. फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस, जिसके वजह से अच्छा सा विंड स्पीड मिलेगा आपको. ऑफशोर विंड एनर्जी बोलते हैं उसको. देन थर्मल, विच काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी? ओशन थर्मल एनर्जी. इट इज कॉल्ड एज ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक. जो इसके पहले एग्जांपल्स मैंने बताया था, दैट वाज फॉर पेट्रोलियम, नॉट फॉर कोल. बॉम्बे है एंड ऑल, वो पेट्रोलियम का था. सो ओटेक कैसे होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज ओटेक? सुना है ओटेक के बारे में? सो ये अभी तो प्रोटोटाइप है बहुत जगह में, अभी बस दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, बट देयर इज अ पोटेंशियल, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल. देखो ये वाला जो प्रोटोटाइप यहां पर दिया है, कैन यूज दिस. सी बेसिकली, चलो इसको मैं फिगर में ही दिखा देता हूं, वो बेटर है. So if this is the surface and this is the bottom of the ocean, we can identify 3 layers based on temperature. कौन कौन सा है बताइए, देखते हैं. एपिलिमनियन, थर्मोक्लाइन, हाइपोलिमनियन. वेरी गुड. एपिलिमनियन, थर्मोक्लाइन, हाइपोलिमनियन. So epilimnion का temperature usually 20 degrees Celsius, average 20 to 25. Okay, hypolimnion is 4 degrees Celsius. So suppose that we develop a system, एक system बनाते मान लो, which will continuously
circulate a kind of liquid. Okay, वो continuously liquid को circulate करेंगे. A type of liquid which gets vaporized very easily by absorbing some amount of heat and cools down by releasing the heat. Okay, बहुत सारा ऐसे liquids आता है कि मान लो 20 डिग्री वाला जो पानी के अंदर हमें पास कर रहे हैं. Okay, let's assume a type of liquid. It gets vaporized. Heat है, temperature है इसके through, it will get vaporized. And now the vapor of this liquid is made to pass through particular chamber. So जहां से हम वो heat को use करके हम steam produce कर सकते हैं. And steam को use करके turbines run कर सकते हैं. We can run the turbine. So now the same is passed through the cooler layers. It becomes colder. फिर दोबारा liquid हो जाएगा. फिर दोबारा ऊपर pump करो. It gets vaporized. So there is a huge difference of energy, right? इसको हम utilize करके energy produce कर सकते हैं. This is the overall prototype. Okay, so we can use the energy difference between the top layer and the bottom layer and generate electricity using that. ठीक है? Prototype है, हर जगह में use नहीं किया है. So कुछ जगह में experimentation चल रहा है. If we can develop a proper mechanism, we can utilize in a large scale. This mechanism is called as ocean thermal energy conversion, OTEC. ठीक है, और एनीथिंग एल्स? टाइडल एनर्जी. टाइडल तो यूज में है, इट्स नॉट प्रोटोटाइप. ओके, वेर एवर देर इज ए हाई टाइड, लो टाइड, टाइडल रेंज, अच्छे से जो टाइडल रेंज रहता है ना, सो व्हेन द वाटर मूव्स अप और मूव्स डाउन, सो वी विल आइदर स्टोर द वाटर और वी विल यूज द सेम रनिंग वाटर टू रन द टर्बाइंस, है ना, या स्टोर करके भी ऐसे डैम बना दो, फिर उसको रिलीज करो, फिर टर्बाइन को वो अपने आप रन करेगा, जनरेट हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट इज टाइडल एनर्जी. देन ओशन करंट से ज्यादा वेव से होता है, वेव एनर्जी. ये भी थोड़ा सा प्रोटोटाइप है, क्योंकि वेव्स, सी व्हाट एग्जैक्टली आर वेव्स? वेव इज ए फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी है. सो वेव्स में जब whenever you see waves in the oceans, it is actually not the water which is moving. Okay, what the waves which you see in the ocean, it is not the water. ऐसा लगता है कि पानी आगे पीछे जा रहा है. Okay, coastal region में थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएगा, but it is not the water which is moving. It is the energy which is moving. So basically the water is just moving up and down. That is how the waves move. They just move up and down and it will just let the energy to pass through. During that motion it causes the waves to rise and fall. ठीक है, तो हम यहां पर ऐसे एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं. मान लो यहां पर एक प्लेटफॉर्म जैसे बना दिया एंड फ्री सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म विथ सम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमने इंस्टॉल कर दिया, फ्रीली सस्पेंडेड है. व्हेनेवर द वेव्स राइज एंड फॉल, इवन दिस प्लेटफॉर्म कैन आल्सो राइज एंड फॉल, ऐसे ऊपर नीचे करता है. सो दैट इज हाउ वी कैन generate this linear motion. Linear motion can be converted into rotation motion. उसको rotation motion convert कर सकते हैं, हमारा मैकेनिकल इंजीनियर बताएंगे इसको. तो फिर rotation motion हो जाएगा, जिसकी वजह से टर्बाइंस रन करेगा एंड फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट इज वेव एनर्जी. ये भी प्रोटोटाइप है. सो एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, बहुत जगह में हो रहा है. सो वी कैन जनरेट, इट इज ए पोटेंशियल. देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ओशंस? Come again? वो फ्रेश वाटर अलग है. Okay, we'll do that. Solar energy, yes, we can extract solar energy. So, but थोड़ा सा कॉस्टली है वाटर में इंस्टॉल करना. So, लैंड में इजियर है, क्योंकि विंड जैसे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लैंड में बहुत इजियर है. ठीक है, देन थोरियम सुना है? What is thorium? It's a nuclear fuel. Thorium is a nuclear fuel. Okay, जैसे यूरेनियम है. यूरेनियम तो सुना होगा. Uranium is a nuclear fuel which is capable of undergoing fission readily. Okay, readily उसको वैसे थोड़ा सा प्रोसेस करके न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल दो, वो फ्यूजन
प्रोड्यूस हो जाएगा, बट थोरियम नहीं है, ऐसा नहीं है. Thorium is not something which is readily fissionable, or maybe we don't have the technology. Based on the presently available technology, this is not readily fissionable. India has 3-stage nuclear fuel technology, nuclear energy production technology, है ना, प्रोग्राम है हमारा. सो सुना है इसके बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? ठीक है, सो जब टॉपिक आएगा तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये होगा न्यूक्लियर एनर्जी. सो इंडिया हैज a huge quantity of thorium. Thorium is a nuclear fuel. So, but it is not readily fissionable. Thorium is not readily fissionable. So, uranium is readily fissionable. We have very less quantity of uranium, है ना. So, हमने ऐसे बनाया है कि हमने मतलब बहुत पहले से ये प्लान है. कौन बनाया था? होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, उनका प्लान था 3-stage न्यूक्लियर energy generation program. So first we will utilize whatever the uranium available here and we'll also import the uranium and generate energy, and उससे second stage पे पहुंचेंगे जहां पर हम plutonium produce करेंगे. Okay, in the second generation, in the second stage, we will install breeder reactors. Breeder reactors बोलते हैं. So थोड़ा सा plutonium डाल दो और ज्यादा plutonium मिलता है उससे. That is why it is called as breeder reactor. And वो plutonium use करके हम thorium को fissionable बना सकते हैं. Okay, we can convert into fissionable material, so and we can produce energy. First stage तो हमारा पूरा successful है, पूरा complete हो गया. Second stage just enter किया है. So in few of the places we are doing this breeder reactor का चल ही रहा है. So based on the output of that, based on the overall success of this, we will move into third. जब third अगर पहुंच गया, इंडिया का कभी भी कोई भी एनर्जी का इनसिक्योरिटी होगा ही नहीं. इतना सारा import dependency है हमारा, वो सारा खत्म हो जाएगा. Okay, so because we have the largest quantity of thorium in the world, largest quantity of thorium in the world. If at all we are able to reach the third stage, कभी भी हम कोई कंट्री से हम कोई एनर्जी के लिए किसी से डिपेंडेंट नहीं होंगे, एंड रुपी वैल्यू भी बहुत बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि बिकॉज इट इज मेजरली इम्पैक्टेड बाय द पेट्रोलियम इंपोर्ट्स, राइट. सो इंटरनेशनल इवेंट इतना सारा तो इम्पैक्ट रहेगा ही नहीं. फाइन. सो थोरियम, सो लेट्स होप दैट वी विल रीच देयर सून. थोरियम, हाँ बात करते हैं. सो दैट इज थोरियम. थोरियम ऐसा नेचुरली ऐसे एज इट इज अवेलेबल नहीं होता है. सो इट इज मिक्स्ड इन द बीच सैंड. ओके, बीच सैंड which is called as monazite sand. Monazite sand. Monazite sand. Monazite sand is a type of sand which is found along the coastal regions of India. Okay, कहां पर मिलता है monazite sand? Most of the emergent coast. Emergent coast कौन कौन सा है बताइए? ईस्टर्न साइड एंड केरला कोस्ट. बाकी सारा सबमर्जेंट है. सो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, these are the regions where we find this monazite sand. Monazite sand contain thorium. Along with thorium, it also contains rare earth elements. REE. सुना है rare earth elements? So rare earth elements are the group of minerals or the elements which we can say which are used in high-end technology. सैटेलाइट कम्युनिकेशन या इवन द कंप्यूटर चिप्स एंड ऑल, बहुत सारा हाई टेक्नोलॉजी में उसको यूज करते हैं. एंड प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना. चाइना से ही आ रहे. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंड ऑन चाइना ओनली फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स. दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स. और कभी ये लोग डिसाइड किया तो हम नहीं देंगे तो वो बंद हो जाएगा. But India has a huge quantity of this, and that is also part of this monazite sand. So that's why we have made an agreement with Japan, and both are collaborating together to produce this. हमारे पास ज़्यादा technology नहीं है, so we have to extract this, we have to process it, and सब लोग ये जो monazite sand है बीच में मिलता है. So but no, not everybody can extract this. Only the government agency can extract this. उससे थोरियम भी है and rare earth elements भी मिल जाएगा. So और बताइए, anything else? हाइड्रोजन as well as ड्यूटेरियम. हाइड्रोजन भी आएगा एंड ड्यूटेरियम भी आएगा. सुना है ड्यूटेरियम? व्हाट इज ड्यूटेरियम? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. सो ड्यूटेरियम D2 वो इज कॉल्ड एज हेवी वाटर.
heavy water. So the ocean water is a huge natural source of this deuterium. And इसका क्या utility है deuterium का? It is used as coolant. It is used as coolant in nuclear reactors. It is used as coolant in nuclear reactors. Coolant in nuclear reactors. ठीक है, सो इतना सारा एनर्जी सोर्स है. सो देन फूड में तो पता ही है, मेजरली इट इज फिश. ठीक है, हिल्सा भी है, बताइए. ऑस्मोसिस वो इसमें लेके आएंगे फ्रेश वाटर में. So fish, wide variety of fish, and this is one of the oldest economic resource which we have been extracting from the oceans. And बहुत पहले से ही, and it is one of the oldest source of food for human beings along various different parts of the world. So इसको पूरा डिटेल में separate topic में हम पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है, fish resources overall across the world वो कैसे होगा वो पूरा separate topic में पढ़ेंगे. Fish, and other than that the crabs, prawns. नहीं, प्रॉन तो ओशनिक है, वो कल्चर बनाते हो, कोस्टल रीजन में होगा वो ओशनिक है. सो मतलब इट इज आर्टिफिशियली कल्चर्ड बट यूजिंग द सॉल्ट वाटर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीवीड. सीवीड्स, सो सीवीड्स तो सुना होगा है ना, कोस्टल रीजन में बहुत जगह में मिलता है. एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी न्यूट्रिशियस and very tasty also. बहुत जगह में अलग अलग बहुत variety है. It is considered to be very nutritious and tasty, but not widely used. So, but in the coming days, this is going to become very important, very prominent. Why? With increase in population, we need more food, but we cannot increase the agriculture land accordingly. Agriculture land का limitation हमेशा रहेगा because we need more land for the urban activities. So there is always a limitation. So we need to look for alternative source of food in order to ensure food security as well as nutritional security. दोनों के लिए ये जरूरी है. फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल है इसका, सीवीड्स, क्योंकि वेजिटेरियन भी है, ये भी इश्यू नहीं होगा है ना बहुत लोगों के लिए. So that's about the food. Then comes water, fresh water. Okay, so ocean से बहुत सारा, it's a huge potential. It has a huge potential for fresh water extraction, and there are different methods to extract. Presently, one of the most commonly used methods are reverse osmosis and electrodialysis. These are the methods used in extraction of fresh water from the oceans. ठीक है, देखा कितना सारा मिला. ये सब तो आपको पता ही है ना, ऐसा नहीं कि पता नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी विल बी लाइक दिस ओनली, बिकॉज दीज आर थिंग्स व्हिच यू नो एंड यू जस्ट हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन ए डाइवर्सिफाइड मैनर. मतलब जितना डाइवर्स करके आप सोचते हैं, जितना ज्यादा एग्जांपल्स देंगे, जितना ज्यादा मतलब मल्टीपल पॉइंट्स देंगे, उतना अच्छा है. सो यू मे एक्सप्लेन फ्यू ऑफ दीज रिसोर्स इन अ वेरी डिटेल मैनर, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा. इफ एट ऑल आई एम आस्किंग व्हाट आर द डिफरेंट ओशनिक रिसोर्सेस or the resources which can be extracted from the oceans, I would expect you to write all the different types. Okay, even if you mention one line, that is sufficient for me. But rather, if you're just discussing one or two petroleum के बारे में बात कर लिया या polymetallic nodules के बारे में बात कर लिया, बस खत्म है, ऐसे तो that will not fetch more marks. So diversify करने, ज्यादा points लेके आने, तब भी इसमें marks मिलेगा. ठीक है? So that's about the oceanic resources. Let's take a short break. Reverse osmosis. RO is reverse osmosis. And after the break, we'll continue with the issues associated with the oceanic resources, है ना, जिसके बारे में बात करेंगे. Okay. So that was the first part, the oceanic resources. What is sequestration? Yeah. So that was oceanic resources. So if there are so many oceanic resources, what are the
issues associated, why we are not able to extract all of this, issues related to oceanic resources. Okay. Technological issues. What are the technological issues? Examples. ठीक है. Which resource? We discussed so many resources. किस में technological issue है? Oceanic thermal energy conversion. OTEC का limitation है. Then wave energy है. Polymetallic nodules extraction में technological limitation है. Other than technological, environmental issues are there. Disturbance of marine life. Geopolitical issues. Then economical issues. The funding or the costs of exploration. Then geographical limitations. Most important तो वही है. Dense, हाँ. So geographical limitation is the most important. इसके वजह से बाकी सारा आता है. Why the cost is high? Why the technology limitation है या environmental issues इतना क्यों आ सकते हैं? Because of limitations of geography. Because the oceans are too deep, too dark and too cold. है ना? It's too deep. 5,000 meters, 6,000 meters, 8,000 meters. So इतना deep में तो मतलब you can imagine the overall the amount of pressure this much of water column is exerting. And the temperatures are very, very cold, freezing conditions, and no sunlight, okay, no visibility. In addition to that, it is not a plain area. There are different mountains, different barriers, physical barriers, which is very difficult to cross on the ocean. So there are many geographical limitations जिसके वजह से economically it is difficult, technologically it is difficult, environmentally difficult है. So administratively in terms of the international cooperation or the issues between the different states, all of this would come up, right? So write about this. First one, the geographical limitations the oceans are too deep, too dark, too cold. और क्या लिमिटेशन था उसमें? The physical barriers like ridges, trenches, to harsh conditions, difficult to reach, risky environment, yes. And in terms of even distribution also not uniform. The distribution of all these resources are not completely uniform. ऐसा नहीं कि हर जगह में मिलेगा. So there's distribution की वजह से क्या क्या issues आ सकता है बताइए वैसे ही लिखते जाओ. Distribution is not uniform जिसकी वजह से क्या क्या issue आ सकता है. पहले examples बताइए. What are the examples of different minerals which are not uniformly distributed? Petroleum and natural gas, they are not uniformly distributed. हर जगह में नहीं है. है ना? They are concentrated on only few of the regions. What are the implications of this? Implications of non-uniform distribution. Dependency on those regions जहां पर ज्यादा है. Okay, so lack of energy security. लिखते जाओ ये सब तो. So lack of energy security, particularly developing countries के लिए बहुत ज्यादा issue है. और क्या दिक्कत हो सकता है? ठीक है, वो बाद में आएगा. अभी प्रेजेंट में क्या इश्यू है इसका? Wars, many of the wars were fought for this. Most of the Kuwait war, Iran-Iraq war, Gulf war, ये सारा पेट्रोलियम के ऊपर ही था, है ना? The wars were fought and the international relations were affected because of this, the non-uniform distribution. Pricing, है ना? Price fluctuation. So the formation of cartels
कार्टेल इज दैट ग्रुपिंग ऑफ दीज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. वो लोग जितना डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से पैसा होगा, मतलब प्राइस होगा. ठीक है, प्राइसिंग इश्यूज. सो सबसे बेस्ट कोल कहां, बेस्ट पेट्रोलियम कहां पर मिलता है? नॉर्थ सी. वेनेजुएला लार्जेस्ट है. बेस्ट कोल, सॉरी, बेस्ट पेट्रोलियम इज नॉर्थ सी. नॉर्थ सी. सो इट इज कॉल्ड एज ब्रेंट. ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट ऑयल सुना है? तो उसका क्वालिटी के ऊपर इंटरनेशनल प्राइस डिसाइड होता है. दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑयल. इसके हिसाब से बाकी सारा क्वालिटी कंपेयर होके फिर डिसाइड होता है प्राइस. देन और क्या इश्यूज है पेट्रोलियम नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से? हो गया वो सब तो. देन लिमिट्स टू ग्रोथ. लिमिट्स टू ग्रोथ. नहीं, वो सब तो बाद में. अभी पेट्रोलियम में ही है हम अभी भी. बताइए. लिमिट्स टू ग्रोथ. हाँ, वो एनवायरनमेंट में इंक्लूड करेंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज में. सो ये बस इसी का ही है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का ही है. इसके अलावा अनदर मेजर रिसोर्स जिसका डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंपैक्टेड है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स. द वे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, जिसकी वजह से हम ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. यूनिफॉर्मली स्प्रेड है हर जगह में, एक जगह में नहीं मिलेगा. बट देर आर फ्यू रीजन्स वेयर यू कैन फाइंड देम, मतलब थोड़ा सा कुछ जगह है जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है. सो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट. Okay, because of because of uniform distribution and not in a concentrated manner, it is difficult to extract. However, it is concentrated in few of the regions. Examples: Peru coast, the coast of Peru, Peru coast, the region of Clarion, Clipperton zone. Clarion, Clipperton zone. ये एक जोन कहां पर है? ये हवाई आइलैंड से लेके जो कैलिफोर्निया तक ये बीच वाला रीजन है ना. दिस इज व्हाट इज क्लैरियन क्लिपर्टन जोन. एंड देन नियर टू कुक आइलैंड, near to Cook Island, and then Central Indian Ocean. Central Indian Ocean, ये सारा ओपन ओशन में ही है. सो ओपन ओशनिक बेसिन में डिपॉजिटेड है ना. सो दीज आर ऑल स्प्रेड इन द ओपन ओशन. सो इट बिलोंग्स टू whom? International Seabed Authority. Belongs to everyone but overseen by International Seabed Authority. So belongs to everyone का मतलब कोई भी जाके वहां पर एक्सट्रैक्ट कर सकता है क्या? कर सकता है, बट यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम ISA. अगर मल्टीपल कंटेंडर्स है तो ऑक्शन जैसे होगा, है ना. एंड यू हैव टू पे रॉयल्टी. यू हैव टू पे रॉयल्टी. जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं वो रॉयल्टी देना है. तो इसके लिए इतना ज्यादा कंपटीशन क्यों नहीं है? ज्यादा एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल इंडियन ओशन का जो बेसिन है, यहां पर हमने लीज पे लिया था. वी आर टेकन लीज फ्रॉम ISA फॉर 15 years. वी कुड नॉट एक्सट्रैक्ट एनीथिंग बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है. नहीं, इट्स टू डिफिकल्ट. सो लीज एक्सपायर हो गया, फिर दोबारा एक्सटेंड किया है. सो बट दिस टाइम वी हैव स्टार्टेड ए प्रोग्राम कॉल्ड एज डीप ओशन मिशन. डीप ओशन मिशन कि वो हमने शुरू किया है. सो द मेजर फोकस ऑफ दिस डीप ओशन मिशन इज टू डेवलप द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर अंडर वाटर एक्सट्रैक्शन. एक अंडर वाटर व्हीकल डेवलप करना है विच इज केपेबल ऑफ गोइंग इनटू द डीपर पार्ट्स एट दैट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन में जाके एक्सट्रैक्ट करने का टेक्नोलॉजी उसमें मतलब उसका पार्ट है. उसके साथ में 2-3 कंपोनेंट्स भी है. एक है डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी भी बनाना है उसके थ्रू, एंड ओशन क्लाइमेट सर्विस भी है उसके अंदर. ऐसे मल्टीपल है. सो विल रीड अबाउट दैट इन करंट अफेयर्स उसमें, बट अभी के लिए एक ब्रीफ नोट ऐसे ऐड कर दो. सो डीप ओशन मिशन ऑफ इंडिया, ओके, दे आर प्लानिंग टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्शन
of polymetallic nodules. ठीक है. So these are all related to the issues related to distribution के context में issues है. पहले था जियोग्राफिकल लिमिटेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में स्पेसिफिकली एग्जांपल देना है. ऐसे जनरली टेक्नोलॉजी का इश्यू है, एनवायरमेंटल इश्यू है, ऐसे नहीं बोलना है. सो टेक्नोलॉजी में कौन कौन सा इश्यू है? एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स. Okay, so there is a technological issues, extraction of polymetallic nodules. And then OTEC, ocean thermal energy conversion, wave energy, fresh water extraction, वो भी technological limitation है. Fresh water extraction and थोरियम का भी लिमिटेशन है, टेक्नोलॉजी का ही लिमिटेशन है. मतलब इवन इफ यू आर रेडी टू स्पेंड मोर मनी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है. लाइक यू नीड टू डू मोर रिसर्च, R&D होना है तभी होगा. सो अभी आएगा पैसे के बाद इकोनॉमिकल इश्यूज. सो इवन इफ यू डेवलप टेक्नोलॉजी, इन फ्यू ऑफ देम वी मे हैव टेक्नोलॉजी बट इट इज टू कॉस्टली. ओके, सो फ्यू ऑफ द कंट्रीज हैव डेवलप्ड द अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी है उनके पास. क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज लैंड के ऊपर करना चीपर है अभी. Okay, it is cheaper to extract these minerals on the land than the oceans. Okay, so economical example, extraction of polymetallic nodules, and even fresh water is also. RO reverse osmosis का जो process है उससे बना सकते हैं, but it is too costly. Okay, even the fresh water is also limited by cost. So फिर आएगा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज. सो कोई भी एक्सट्रैक्शन रिलेटेड एक्टिविटी ले लो, उसमें एनवायरमेंटल इश्यू है ही. इट विल डिस्टर्ब द लाइफ ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी जितना सारा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेट्रोलियम एंड गैस का, उसका टेक्नोलॉजी इश्यू नहीं है, कॉस्ट का इश्यू नहीं है. ओके, सो मेजरली इट्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इश्यू. So because of this, wherever there is a oil spill जब भी जहां पर भी होता है, it will destroy the entire marine ecosystem. Okay, best example, Gulf of Mexico oil spill, one of the largest and one of the worst. Okay, so and all these activities in the continental shelf will disturb the entire marine life को disturb कर देगा. So then even the deep water exploration activities would also disturb the deep water ecology. वहां पर भी life है. Okay, जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. लाइक वंस वी गो ओवर देयर वी विल ट्राई टू नो बेटर. सो द लाइफ विच एग्जिस्ट इन द डीप वाटर इज अडेप्टेड टू लिव ओवर देयर. बहुत कम है बट है, बहुत स्पेसिफिक टाइप है. सो बट वंस वी डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉयड, वो दोबारा वापस नहीं आएगा, है ना. एंड ये जो फिशिंग मेथड्स है, देयर आर वेरियस डिफरेंट फिशिंग मेथड्स. ना ट्रॉलिंग बोलते हैं, पूरा बड़ा सा नेट लगा के पूरा बॉटम से निकाल के लेके आते हैं. फिश तो मिल जाएगा, उसके साथ में पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा. Okay, it will destroy everything. Most importantly, coral reefs को disturb करता है. ठीक है, it will destroy the coral reefs, mangrove ecosystem. So all of this that is related to environmental issues. ठीक है, so, और कुछ ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जो करंट रिलेटेड आएगा मिलेगा, ये सब ऐड करते जाओ. That the overall idea is to bring up the discussion and give you the overview. These are the issues related to water resources. And the third important, the major part is fish resource. So what is the practice of growing fish? Pisciculture. Aquaculture is anything in the water. It is aquaculture. ठीक है, pisciculture बोलते हैं. ठीक है. So but the overall fishing activity is one of the very old activity. Agriculture के पहले से ही था.
है ना. That is a method of hunting also. ना बहुत पहले से when we were hunters gatherers, so we used to hunt fish also, like fishing बोलते हैं. ठीक है. So the fishing में दो टाइप है, एक है inland fishing, दूसरा है marine fishing. Inland fishing and marine fishing. Inland fishing is majorly freshwater fishing. Marine fishing is saltwater. So marine fishing में there is no artificial, मतलब fishing, मतलब we won't do the culture. We'll just extract. We'll just catch it. That's what is marine fishing majorly. Inland में दोनों होता है. Rivers में जो होगा naturally आएगा उसको भी पकड़ते हैं. But otherwise ponds and lakes and wetlands, they do the artificial culture also. They grow the fish. They use the fish seed. Fish seed बोलते हैं. Fish seed is basically these fertilized eggs. Okay, they disperse it in the water, they protect it, and they ensure there is a sufficient growth. Then they extract it, then they catch it. So both the types of fishing activities are there. Overall, across the world, there are different regions which are very, very rich in terms of fishing resources. Okay, these rich resources, rich regions in terms of the fish, they are majorly concentrated in the temperate regions. टेम्परेट रीजन्स में ही सबसे ज्यादा है. यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, सो दीज आर द वेरी रिच फिशिंग एक्टिविटी, फिशिंग जोन्स जहां पर है. एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट, ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन्स, दैट इज बिटवीन 45 to 60 डिग्री, 65 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. दिस इज वेरी रिच इन फिशिंग एक्टिविटी. व्हाट आर द रीजन्स? द मर्जिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशन करेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट रीजन है ना. व्हाई इट इज फेवरेबल? Upwelling अलग है, upwelling अलग है. Wherever there is a merging of warm and cold ocean waters, so the conditions are favorable for the growth of fish. Why? The conditions are good for phytoplanktons. Okay, why the conditions are good for phytoplanktons? The temperature. Okay, cold water, the temperature is too cold, but it contains good amount of nutrients. Warm water, it is too hot, and all the nutrients will decompose very fast. It will not contain much of nutrients. उसमें ज़्यादा nutrient नहीं रहता है. इसलिए most of the whales, even though they live near to the tropical equatorial region, they come to the polar regions, okay, for feeding, breeding. So they come to the polar region. Most of the whales travel from equator towards the poles. Poles तक आते हैं, फिर वापस जाते हैं. These cold waters are very rich in terms of the nutrient supply. So wherever there is a merging of both warm and cold waters, the phytoplanktons grow very well. It is rich in oxygen, rich in organic content, rich in nutrients, जिसकी वजह से they grow very well wherever there is a merging of warm and cold ocean currents. Okay, the famous regions where the merging of warm and cold ocean currents happen, the merging of Gulf Stream with Labrador Current, the merging of North Atlantic Drift with East Greenland Current, and the merging of waters of North Atlantic Drift with the cold waters of Arctic Ocean, and the merging of Kuroshio Current with Oyashio Current. कि जहां पर भी मर्ज होगा, the conditions are favorable for the growth of phytoplanktons. ठीक है. So चलो और है, डिस्कस करेंगे, तो लिखो इसके बारे में. फिशिंग रिसोर्स, the conditions favorable for the growth of fish. So first one क्या था? Merging of warm and cold ocean currents. So इसीलिए टेम्परेट रीजन में सबसे ज्यादा है. यू विल नॉट हैव द वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स मीटिंग नियर टू द ट्रॉपिकल रीजन. वो तो दोनों टेम्परेट रीजन में ही मीट होगा ना. Merging of warm and cold ocean currents. Examples: merging of Gulf Stream with Labrador Current, near Newfoundland Island. नेक्स्ट, मर्जिंग ऑफ कुरोशियो विथ ओयाशियो. ओयाशियो, उसके बगल में एक और था, कौन सा? ओकोट्स्क.
Merging of Kuroshio with Oyashio near Japan. ठीक है, this is one condition. Then anything else? Wide continental shelf, ये बड़ा important है because phytoplanktons they survive near to the continental shelf majorly, क्योंकि sunlight भी अच्छा खासा होता है, nutrients भी रहेगा, oxygen भी रहेगा. So wherever there is a wide continental shelf there is wider banks. Okay, this region also has okay, इनका दोनों एडवांटेज, एक तो वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट भी मिलेगा एंड वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है. यहाँ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत वाइड है. ठीक है, वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ which support plankton growth. So ये दोनों कंडीशन जो है ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस फैक्टर है ऑल दीज टेम्परेट रीजन्स. ठीक है, merging of warm and cold ocean currents as well as wider continental shelf. This region has the widest continental shelf. This also has a very wide continental shelf, and this also has a very wide continental shelf. That is the northeast Atlantic Ocean, northwest Atlantic Ocean, and northeast Pacific Ocean. दोनों का advantage है. Okay, third factor, upwelling. The zones of upwelling. अपवेलिंग कहां पर होगा? Where there is cold ocean currents as well as offshore trade winds. Offshore winds चाहिए, cold ocean currents भी चाहिए. Okay, that causes a stronger upwelling. For example, the Peru and Chile coast. Peru-Chile coast, one of the best in the world for fishing, है ना? So जिसके वजह से कोल्ड वाटर इतना ऐसे स्प्रेड हो जाता है, there is a continuous upwelling and the entire region is very rich in terms of nutrients, है ना? One of the best in the world. इतना ज्यादा होता है कि you cannot imagine. एक छोटा सा वीडियो है, एंड में दिखा दूंगा, याद कर लो. ठीक है, so सबसे बेस्ट यहां पर मिलेगा, द लार्जेस्ट, एंड इसके वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी डेवलप हो गया. मैंने बताया था यहां पर, है ना, डिस्कस किया था. द सेम कंडीशन विथ द रीजन्स ऑफ कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट. ठीक है, कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट. एंड देन एनी अदर फैक्टर्स जो नेचुरल फैक्टर्स है. कोरल रीफ्स. Coral reefs are the grounds where the fish breeding happens, their habitat, the entire Southeast Asia and the Caribbean Sea and the Northern Indian Ocean. ठीक है, these are the conditions which favors the growth of fish. In addition to this, there are few factors which will support the growth of fishing industry. फिशिंग इंडस्ट्री के लिए इसके साथ में और कुछ फैक्टर्स चाहिए. सोचिए, बताता. थिंक अबाउट इट. फिशिंग इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ठीक है, खाली नेट है तो नहीं होगा. बोट्स के लिए क्या चाहिए? वुड, है ना? So wherever there are near to the coastal region where there is a good forest resources अच्छा खासा है, that supports the boat making industry. Okay, presence of forest resource supporting boat making industry. ठीक है, सो और कोई बोल रहे थे, somebody was saying something else. रेफ्रिजरेशन. सो पर हर जगह में तो रेफ्रिजरेशन पॉसिबल नहीं है. इन सम प्लेसेस इट इज
not required also, where there are moderate temperatures. थोड़ा बहुत काफी मतलब नॉर्मल रेफ्रिजरेशन से चलता है. ट्रॉपिकल रीजन में हाई टेम्परेचर विल नॉट सपोर्ट इजी रेफ्रिजरेशन. यू नीड ए बेटर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज. बट टेम्परेट रीजन में ये इतना जरूरी नहीं है, वहां पर टेम्परेचर ही कम है. द फिश विल नॉट डिकम्पोज वेरी फास्ट. Okay, next condition, the moderate temperatures. Moderate temperatures helps fish preservation. And then access to the market. Market कहां पर होगा? कंजम्पशन कहां पर ज्यादा होगा फिश का? एग्जाम्पल मत दो, कारण बताइए कहां पर ज्यादा हो सकता है. बहुत ज्यादा लेस एग्रीकल्चर, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हो. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम कहां पर होगा? वेयर द रीजन, नो नॉट टेम्परेट एज सच, वेयर द रीजन इज नॉट वेरी फर्टाइल, वेयर देयर इज नॉट मच ऑफ प्लेन एरिया. Okay, where there is rugged interior land. For example, Japan. Okay, it is totally mountainous area. Plain area बहुत कम है. Okay, agriculture productivity मतलब ज्यादा नहीं होगा. They cannot produce much of food. So that's why they depend upon fish. Sushi सुना होगा, right? So इसलिए most of the region जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है, agriculture का activity कम रहता है. There is less agricultural production. ठीक है, next one. Rugged interior land. Rugged interior land which is not suitable for agriculture. Example, Japan. Then Sri Lanka also, yes, Sri Lanka by example लिख सकते हैं. और वो सब तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है. पोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए. इन विच काइंड ऑफ कोस्ट वी हैव बेटर पोस्ट्स, सो बेटर पोर्ट्स. इंडेंटेड कोस्ट, जो ब्रोकन कोस्ट जैसे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है. ओके, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज ब्रोकन कोस्ट. ब्रोकन कोस्ट तो बताया था ना मैंने, ऐसे ऐसे रहता है. द कोस्ट लाइन इज नॉट वेरी स्मूथ. सो दीज आर द लोकेशंस व्हिच आर वेरी फेवरेबल फॉर the ports, natural harbors. Okay. The next one, broken or indented coast. Broken or indented coasts supporting natural harbors. So these are the conditions favorable for the growth of fish. Now, why the tropical regions are not well developed in terms of fishing activity? हाई टेम्परेचर की वजह से प्रिजर्वेशन मुश्किल है. हाई टेम्परेचर का एक और रोल है. अपवेलिंग नहीं होगा, ठीक है, गुड. देन बट कुछ जगह में अपवेलिंग वो भी हो जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में भी हो जाता है ऑफशोर विंड से. तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द डाइवर्सिटी इज वेरी हाई. जहां पर हाई डाइवर्सिटी रहता है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ स्पीशीज. ओके, नंबर ऑफ स्पीशीज आर लार्ज. ओके, एक बार नेट लगाया तो यू विल फाइंड मल्टीपल डिफरेंट वेराइटीज. 100 डिफरेंट वेराइटी मिलेगा आपको. क्योंकि उसमें आधा तो एडिबल नहीं होगा, है ना. तो फिर एडिबल को बैठ के सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है. यू कैन नॉट सेल अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ फिश, है ना. तो वो सारा सेपरेट करके ही सेल करना है. तो इसकी वजह से वो कॉस्ट बढ़ जाता है. ओके, बिकॉज ऑफ दैट द कॉस्ट इज हायर, द ओवरऑल प्रॉफिट इज लोअर. हाई टेम्परेचर की वजह से हायर डाइवर्सिटी है. हायर डाइवर्सिटी इज नॉट गुड फॉर द फिशिंग एक्टिविटी. हाउएवर यू कम टू द टेम्परेट रीजन्स, सेम स्पीशीज है. ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल स्पीशीज, बट एक जगह में एक ही टाइप रहता है. ओके, एंड दैट टू लार्ज नंबर में, इतना ज्यादा नंबर्स में मिलता है. सो यू विल बी सरप्राइज, इतना ज्यादा कैसे हो सकता है. सिंगल स्पीशीज, एक ही स्पीशीज होगा.
Okay, you might have heard about salmon, sardine, anchovies, है ना? So all of them are available in a single, मतलब एक group में मिलता है and in a large scale. ऐसे तो नहीं मिलेगा. The first reason here why fishing is not well developed in tropical region, that is the heading. Why fishing is not well developed in tropical regions. First, high temperature is not suitable for fish preservation. Next, high temperature does not support plankton growth. Then, high diversity reduces profit. And unfortunately, in most of these tropical regions, the countries are less developed. Okay, most of these countries are less developed. Less developed is less infrastructure, less investment. Overall, जो जितना infrastructure चाहिए उतना तो नहीं है. Okay, next factor is less investment and less infrastructure. And in many of the countries, the demand is also low. Demand भी कम है. Okay, so because of more agriculture production, okay, so or in a country like India, more cultural reasons, you know. So these are all conditions. बहुत important है, इसके ऊपर already question आ चुका है. Conditions favorable and the second tropical regions में why they are not well developed. हाँ वो तो है टेम्परेचर के वजह से. हाई टेम्परेचर विल नॉट बी गुड फॉर प्रिजर्वेशन है ना, वही फर्स्ट पॉइंट था. यस, बट यू नीड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज टू प्रिजर्व इट. थर्ड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें दोबारा बात करने का जरूरी नहीं है, यही वर्ल्ड मैप लिखे आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो थोड़ा सा जगह छोड़ दो, बाद में घर जाके लिख लेना. So you have to draw this world map and show the different regions. First important region is the Northwest Pacific. Okay, बस region mark कर दिया तो काफी नहीं है, you should also explain why it is so. Okay, first one, Northwest Pacific, where the meeting of Gulf Stream and Labrador Current, North Atlantic Drift and the East Greenland Current, and then the Northeast Pacific from the Spain, Portugal till the Norway coast. Okay, this entire region, because of the warm water mixing with the cold water, wider continental shelf. Okay, and the third important region is the Northwest Pacific. Okay, off the coast of Japan and surrounding, Kuroshio and Oyashio Current and wide continental shelf. And here the cold Californian current, cold Humboldt current. Okay, so and here the coral reefs, all of this region wise with reason and with example आपको explain करना पड़ेगा. यहाँ पर एक दो location है which are called as the fishing bank. Fishing bank बोलते हैं the regions which are very rich in fish. Okay, so near to the Newfoundland Island we have two important fishing banks. One is Grand Bank and Georges Bank. ये दोनों यहां पर है, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट्स जो लोकेशन है. एंड नियर टू यूके यहां पर जो बैंक है इसको बोलते हैं डॉगर बैंक. इट्स कॉल्ड एज डॉगर बैंक. ठीक है, so you can leave some space for this and write later. So let's talk about India's fishing. India का क्या potential है? Do we have a potential in the fishing resource in the world? Yes.
India is the second largest producer of fish in the world. Okay, we are the second largest producer of fish in the world. First कौन सा है? चाइना. So दोनों इंडिया एंड चाइना का दोनों को एडवांटेज है कि इनलैंड फिशिंग. Okay, our major advantage is in inland fishing. We have large number of rivers, lakes, wetlands, deltas, है ना, जहां पर फ्रेश वाटर फिशिंग हम करते हैं वो वही ज्यादा है. सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो उसी से आता है. हमारा जो मरीन फिशिंग है उसको हम ज्यादा यूटिलाइज ही नहीं किया है. ठीक है, कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज दे आर मोर इनटू द मरीन फिशिंग, डीप सी फिशिंग. So and we have a very long coastline, nearly 7,500 kilometers of coastline, fine, and the fishing production contributes 1% of India's GDP, which is very huge compared to the many other industries. Okay, so बहुत ज़्यादा है ये. So overall potential तो है. Okay, potential तो है. What are the challenges in India? India's fishing sector में क्या क्या challenges है? Why we are not able to completely? Why we are not able to completely यूटिलाइज दिस पोटेंशियल? इतना ज्यादा पोटेंशियल है बट फिर भी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. ओके, हमारा जो भी कंजम्पशन होगा डोमेस्टिक में खत्म हो जाता है. ओके, ज्यादा से ज्यादा यहीं पे हम खत्म कर देंगे. सो एक्सपोर्ट के लिए बहुत कम बचता है. एंड ऐसा भी नहीं है कि एक्सपोर्ट के लिए कम बचता है, हम ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं करते जितना पोटेंशियल है. सो व्हाट आर द रीजंस? व्हाई? But see, along with the cost, there is also profit. You bring the cost profit analysis कर दिया तो profit ज्यादा है तो cost तो comparatively कम ही होगा. Technological insufficiency. Technology है but government support ज्यादा नहीं है and people who are involved here. Sanitary and phytosanitary measures, ठीक है, in terms of processing, ठीक है. और बताइए. क्वालिटी तो है, क्वालिटी तो है. डिमांड डोमेस्टिकली कम है बट एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं. यहाँ पर भी है, बहुत ज्यादा है. सी कंपेयर टू द लार्ज स्केल फिशिंग बैंक, ऑफ कोर्स वी डोंट हैव, हमारे पास में उतना ज्यादा नहीं है. ठीक है, बट यहाँ के हिसाब से तो काफी है एंड वो पूरा हमने एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया. इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेजर इश्यू. इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो गया, सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए. जो फिशिंग में जो मॉडर्न बोट्स ये सब तो नहीं है हमारे पास. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. ठीक है, और सोचो इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, सोचो कुछ लिमिटेशंस है. वो थोड़ा सा इंपैक्ट है बट अदरवाइज तो दैट इज नॉट अ रीजन व्हाई वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग. बाउंड्री डिस्प्यूट्स है. यस, बाउंड्री डिस्प्यूट्स है. ठीक है, और डेल्टा फॉर्मेशन इज नॉट ए लिमिट एक्चुअली. साइक्लोन सीजन है, मॉनसून सीजन है. मॉनसून के टाइम में ओशंस आर टू रफ, टू डिफिकल्ट टू डू फिशिंग, है ना. एंड बिफोर मॉनसून एंड आफ्टर मॉनसून तो साइक्लोन भी है, सो वो भी लिमिटेशन है. ठीक है, सो टाइड्स का तो इशू नहीं है. इट्स नॉट, नो, दे हैव मेनी प्रोग्राम्स. ठीक है, चलो एक एक डिस्कस करते हैं. लिखते जाओ. ओवरऑल the type of fishing activity which we do in India is traditional method. We are not doing a fishing as a modern activity. Traditionally कैसे करते हैं? Okay, first point is the traditional methods of fishing. Traditionally कैसे करते हैं? So we use manual boats, manual nets. Okay, manually करते हैं. Most of them do it manually. ठीक है, they're large in numbers. जो small scale fishing farmers जो रहते हैं या fishermen रहते हैं, they are very large in numbers and they are very poor. They cannot afford a bigger boats, better technology, है ना. So most of the fishing is done using traditional methods and the modern methods are not used.
जिसके वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इज लेस, प्रॉफिट्स आर लेस. ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इज लेस एंड प्रॉफिट्स आर लेस. And most importantly, why others are not coming here? Because in India fishing is a caste based activity. Okay, in India fishing is a caste based activity and usually it is looked down upon. है ना, तो सोचते हैं ये तो ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटी ही करना है ना, बाकी लोग नहीं करना है क्योंकि उनका ओवरऑल एक सोशल स्टेटस भी कम है. ऐसे एक ओवरऑल एक the feeling about this entire activity that is not that high. But if you think in terms of the profit involved, that is high. But people would not come forward to do it. है ना, ये चेंज होना है तभी ये आगे बढ़ेगा. राइट, ठीक है. It is a caste based economic activity. Then, and they don't venture into the deep sea to catch high value fish. High value fish you will not find it near to the coastal region. Coastal region के पास में नहीं मिलेगा आपको. थोड़ा सा अंदर जाना है. अंदर जाने के लिए you need better bigger boats, better technology, है ना. So वो नहीं है इनके पास. So most of them, that is, they are not concentrating on the deep sea fishing which is of high value. Exports में जो demand है यही है. Exports में जो demand होते हैं, the demand from the countries with where there is a higher consumption, they demand this high value fish from the deep sea. Then the climatic limitations. Such as monsoon, cyclone, low infrastructure, cold storage facilities, transportation network. And most of them are unorganized. Okay, there is no financial literacy. There is no literacy, there is no financial literacy. Okay, they don't have proper bank accounts. And जिसकी वजह से they take money from the local lenders, है ना, and they were compelled to sell the fish to them, है ना, तो इसकी वजह से. And low investment in the fishing sector. वो तो ट्रेडिशनल है. सोशल रीजंस, ठीक है. सो द पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेरियन पॉपुलेशन, ठीक है. और टेरिटोरियल इश्यूज, एग्जाम्पल श्रीलंका, पाकिस्तान. बांग्लादेश में तो ज्यादा इशू नहीं है, सो थोड़ा बहुत फ्रेंडली है, बट पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में तो, सो दैट्स बिकॉज सी वंस यू वेंचर इनटू द ओपन ओशन यू विल नॉट बी एबल टू सी द एग्जैक्ट लिमिट ऑफ इंडियन वाटर्स. इंडियन वाटर कहाँ तक है वो पता नहीं चलता है. इफ दैट टू इफ यू आर डूइंग मैनुअली बोटिंग कर रहा है तो वो पता नहीं चलता है. मेनी ऑफ द टाइम्स यू जस्ट मिस, मतलब वेव्स की वजह से, विंड स्पीड की वजह से वो अपने आप चले जाता है. सो पाकिस्तान में इसलिए बहुत सारा ये जो फिशरमैन है, दे आर स्टक इन द पाकिस्तान जेल्स बिकॉज ऑफ दिस. ओके, सो पाकिस्तान इमीडिएटली उसको पकड़ते हैं तो जेल में डाल देते हैं. तो हम भी पकड़ के डाले हैं उनके तरफ से, है ना. हाँ वही है, इसीलिए उनको पकड़ के डाले हैं, है ना. So even they also complain the same that our spies will go in the disguise of fishermen and all. So जिसकी वजह से, because they don't have the modern technology, they will not be able to exactly guess कहाँ पर Indian waters है. So issue with the Sri Lanka is that the earlier when the war was going on, tigers, you know, the Tamil tigers war was going on. So at that time, most of these Tamil rebels, they used to come in the disguise of this Indian Tamilian fishermen. Okay, Indian Tamil fishermen के disguise, क्योंकि दिखता तो सेम ही है. The Indian Tamils and the Sri Lankan Tamil, they look same, है ना. लिट्टी, what is it? ठीक है, LTT, ठीक है. मैं भी सोच रहा था लिट्टी चौक. So रुको. So they used to come in that disguise, and जिसके वजह से the Sri Lankan Navy had faced huge issues, and so this initially they used to capture them, उसको पकड़ते थे. So फिर बाद में ये लोग आके
they used to fire from a distance itself to avoid that. Whenever Sri Lankan Navy sees any of the boats in their waters, they will directly fire it. दूर से fire कर देते हैं. So whether it is Indian Tamils or Sri Lankan Tamil, they don't want to, मतलब they don't want to go into the intricacies. फिर उसको पकड़ो, फिर वो रिस्क हो जाता है ना, तो दे मे फायर एनी टाइम. सो इसकी वजह से दे विल जस्ट फायर फ्रॉम ए डिस्टेंस. बिकॉज ऑफ दिस मेनी ऑफ द तमिल फिशरमैन दे हैव डाइड. ओके, इट हैज बिकम ए ह्यूज इशू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब तमिल वॉर, जो टाइगर वॉर का जो चल रहा था, सो बहुत बहुत हाई स्केल में चल रहा था. मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम तमिलनाडु दे हैड डाइड. पता ही नहीं चलता, बिकॉज वंस यू गो इन द ओपन ओशन इट्स टोटली वाटर, यू डोंट सी लैंड ओनली, राइट. ठीक है, एक बार ऐसे ही हुआ था, इटालियन का जो शिप आ रहा था, दे इवन फायर्ड ऑन द इंडियन फिशरमैन, जिसके वजह से वो उनका केस भी चल रहा था, बहुत सालों तक चल रहा था. सो ऑल ऑफ दीज आर टेरिटोरियल इश्यूज. अभी तो वो सेटल्ड है, सो दैट इज नो मोर ए इश्यू. सो आफ्टर द एंड ऑफ द टाइगर वॉर, ठीक है. So that's why we were not able to develop. These are the major problem. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, one of the most potential area. And okay, let me just take 5 more minutes and finish this topic. What are the initiatives taken by the government? Government initiatives. स्पेसिफिक स्कीम्स यहां पर है. फर्स्ट वन, ब्लू रेवोल्यूशन. Okay, blue revolution was a major program initiated by the government. So ब्लू रेवोल्यूशन was started by the Indian government, सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू हुआ था आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस के बाद में हमने शुरू किया. इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग 5th and 6th 5-year प्लान. 5th and 6th 5-year प्लान के टाइम में हमने शुरू किया था. सो विद द ओवरऑल इंटेंशन ऑफ सपोर्टिंग दिस फिशिंग सेक्टर, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2 phases. के 2 फेज में इंप्लीमेंट हुआ था. द फर्स्ट फेज वाज बिटवीन 1980 to 1991. Second phase was between 1991 to 2005. 2 फेज में इंप्लीमेंट हुआ है द ब्लू रेवोल्यूशन. सो इस फेज में क्या किया? बेसिकली इन बोथ द फेजेस दे एस्टैब्लिश ए ऑर्गेनाइजेशन, द एजेंसी कॉल्ड एज FFDA, फिशिंग फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी. FFDA बोल के एक एजेंसी को एस्टैब्लिश किया था. दिस वाज द नोडल एजेंसी टू सपोर्ट फिशिंग सेक्टर इन इंडिया. सो इनिशियली इन द फर्स्ट फेज दे टारगेटेड इनलैंड फिशिंग ओनली. इनलैंड फिशिंग को ही टारगेट किया था. सो थ्रू दिस एजेंसी दे डिस्ट्रीब्यूटेड गुड क्वालिटी फिशिंग सीड, फिश सीड को डिस्ट्रीब्यूट किया था. थोड़ा सा लोन वगैरह भी दिया था, फार्मर्स को एजुकेट भी किया था, जिसके वजह से इनलैंड फिशिंग ऑलमोस्ट डबल्ड. In the first phase, our inland fishing output almost doubled. Based on the success, we started the second phase. यहां पर हमने दोनों का टारगेट किया, इनलैंड भी था एंड मरीन भी था. सो मरीन में बेसिकली हमारा जो कोस्टल स्टेट्स है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को टारगेट किया था इन द सेकेंड फेज, एंड इवन दिस हैज बीन सक्सेसफुल. सो FFDA के थ्रू ही ये सब इंप्लीमेंट किया था. ऑल ओवर इंडिया दी सेंटर्स वर ओपन, FFDA के सेंटर्स ओपन किया था, एंड द फार्मर्स वर ट्रेन्ड, फार्मर्स वर ओवरऑल दे वर गिवन द फाइनेंस एंड द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू ग्रो फिश. सो 2005 के बाद में ये डिसकंटिन्यू हुआ था. तो इन 2006 ए न्यू बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड. नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड. This is the nodal agency presently, National Fisheries Development Board, both for inland as well as marine fishery. ठीक है, ये एक और इनिशिएटिव है. फर्स्ट इनिशिएटिव ब्लू रेवोल्यूशन. ओके, ओवरव्यू याद रखो, स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं आएगा, पुराना है. ओवरऑल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, ऐसे क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट. सो सेकंड इनिशिएटिव वाज नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006. सो थर्ड, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लाइक जो हमारा मरीन फिशिंग का जो पोटेंशियल है वो बहुत कम यूटिलाइज किया है हमने. सो इसलिए लाइक वी हैव ए नेशनल पॉलिसी इटसेल्फ ऑन दिस. वी ब्रॉट ए नेशनल पॉलिसी, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज. नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज. सो दिस वाज ब्रॉट इन द ईयर 2017.
So this national policy overall it highlights the objectives of the government in the context of marine fishery. हम क्या करना है, कैसे करना है. And presently जो implementation में था, that is Mission Neel Kranti. This was a 5-year mission started in the year 2015. 2020 तक खत्म होना था. मिशन नील क्रांति, यही ब्लू रेवोल्यूशन को हिंदी में लेके आए दोबारा, है ना. तो मिशन नील क्रांति, बट दिस वाज ए ओवरऑल रिवैम्प्ड मिशन, है ना. सो दिस मिशन aim to support the entire fishing sector in a holistic manner. So that's why it is also called as integrated development and management of fisheries. Okay, this mission is also called as integrated development and management of fisheries. Overall objective to enhance the economic prosperity of the country by augmenting fisheries fish farmers and contribute towards food and nutritional security. Food and nutritional security. Currently एक और प्रोग्राम है मत्स्य संपदा योजना. ओवरऑल इसमें टारगेट था अगेन फिशरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, पर्टिकुलरली फिशरमैन को सपोर्ट करना है. सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिशरमैन आर अनऑर्गेनाइज्ड, इनके पास में ज्यादा सोशल सिक्योरिटी नहीं रहता है. सो दिस प्रोग्राम इज फॉर प्रमोटिंग एंड इंक्रीजिंग द सोशल सिक्योरिटी कवरेज. लाइफ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, ऐसे कुछ सिंपल स्कीम्स बनाने के लिए ओवरऑल ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ था 2019 में. ओके, सो इट वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 2019 with the aim to promote aquaculture. To benefit all fishermen. With social security. And to expand coverage. To include accidental insurance. ठीक है. सो दैट्स अबाउट फिशिंग रिसोर्सेस. एक और लास्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. दैट इज फ्रेश वाटर रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया. इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है इसके कंटेक्स्ट में. सो विल टॉक अबाउट दैट. अच्छा, वीडियो दिखा दो अभी. हाँ, ये भी बच गया था. चलो वीडियो नेक्स्ट क्लास में दिखा देते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास याद दिलवा देना, वीडियो दिखा देता हूं. So, पहली बात है कि वो अच्छा क्वालिटी तो 2 दिन का ही था, अभी दोबारा खराब हो गया. So but still it is better than last year. Okay, so overall the air quality in Delhi is better. Why? So first of all you should understand why the air quality is bad at the first place. Okay, पहले तो there was higher pollution, crackers हो गया, the stubble burning हो गया, जिसके वजह से बहुत ज्यादा pollutants एक ही टाइम में निकल के आता है. ठीक है, बट नॉर्मल टाइम में डिस्पर्स हो जाएगा. बट during the October and November में the temperature is low and the air is stagnant, and due to the temperature inversion के वजह से वो disperse नहीं होगा. ठीक है, and temperature inversion के वजह से smog बन जाएगा, and एक बार smog बन जाएगा temperature और drastically decrease होते जाएगा because sunlight को stop कर देगा. But luckily this time many factors came together. One, Diwali was bit early this year.
सेकेंड, रिट्रीट ऑफ मॉनसून वॉज बिट लेट, है ना, दोनों साथ में आ गया. रिट्रीट लेट हुआ है तो विंड्स थोड़ा सा और एक्टिव रहता है, विंड्स विल बी स्टिल एक्टिव. रिट्रीट जल्दी हो गया तो काम कंडीशन जल्दी आ जाएगा. सो विंड्स आर स्टिल एक्टिव एंड टिल रिसेंटली फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक बारिश हो रहा था. रिट्रीट वॉज लेट, राइट. एंड दिवाली भी पहले आ गया. वो जो पोल्यूशन का जो टाइम था वो ऐसा था कि अच्छा सा डिस्पर्स हो गया because of strong wind, better winds. And the third, the temperature was also slightly higher. Temperature भी थोड़ा सा हाई था. So overall global warming pressure variation के वजह से we can say so, and late retreat की वजह से भी ये कारण बोल सकते हैं. And जिसके वजह से there was not much of temperature inversion. Temperature inversion नहीं हुआ था. Temperature was higher in fact, and winds were stronger. ठीक है. And of course in addition to government efforts भी थोड़ा बहुत था. एंड जिसकी वजह से दिल्ली वॉज बेटर ड्यूरिंग दिवाली. जैसे जैसे ये विंड स्पीड कम होते गया अभी पोल्यूशन इंक्रीज होते जा रहा है. ओके, विंड स्पीड अभी तो ज्यादा कुछ है ही नहीं. इवन यू कैन फील देयर इज नॉट मच ऑफ विंड स्पीड एंड टेम्परेचर हैज स्टार्टेड टू डिक्रीज. सो टेम्परेचर इन्वर्जन वुड हैपन. सो डेफिनेटली तो दिल्ली के लिए है ही, so we cannot avoid this. ठीक है. So in the next class we'll talk about the fresh water resources as well as natural vegetation. Natural vegetation के बारे में बात करते हैं. Thank you.